everyone. Today is a very special. This is the 12th CME of our ISA Bihar Jharkhand, and this is a very special CME. And this is something different from our clinical topic. Know your ISA. And so, to start this session, I will first of all welcome our president, Dr. D.K. Singh sir. Dr. D.K. Singh sir. Yes, madam. Thank you. Vice President Dr. Mahesh Kumar. Our very senior member and ex-GC member Dr. Manoj Kumar. Thank you, ma'am. Thank you very much. And today our special invitee is our past president Dr. B.K. Prasad sir. So I welcome everyone for this special, I welcome everyone in this 12th CME. This is a special session, and the entire session will be moderated by our State Secretary, Dr. Sharad Kumar. We welcome Naveen Malhotra sir. Sir, welcome and good evening. And I hand over the mic to Sharad to start the session. Thank you, madam. Thank you very much. I'm audible? Yeah. Okay, thank you very much. So as you all know, Dr. Neelam has already introduced, given the brief about this CME. Why I will not call the CME. It is a mixture of CME plus workshop and plus knowledge enhancement also regarding the. So today is a very important day for Bihar and Jharkhand, because we are going to complete one round, one full cycle, 1 year, that is 12 months of continuous CME. We are organizing since this digital era started. And we are having Dr. Naveen Malhotra sir today with us, who is the National Secretary of the ISA. And he will be speaking all about the ISA and its activity. So our member, the common member of the Bihar and Jharkhand, all the way they are very well, they are very active. They are taking all the interest in all the academic activity. But today, other than the academic activity, the ISA National is doing so many things. So it is important for all of us to know about that activity. So we will start that things in our branch also. My aim is that Bihar and Jharkhand in the next 3 to 5 years should be comparing with the Maharashtra and the Delhi. We should have our members, our the city branch know that this Bihar and Jharkhand is doing, the person from the Bihar and Jharkhand is doing good in this city branch is good, like the Nagpur or the Maharashtra, Karnataka, some Bangalore or the Delhi is doing, the Patna is doing the same level of activities like these metros are doing. So it is very important that we should start as early as possible. So this was our dream. We discussed with among ourselves, and we thought that why not directly talk to the person who is controlling at the national. So we requested Dr. Nabil Malhotra sir to please join and give your spend some valuable your very valuable time with us and give the information about this activities. So I would like to, although we all know Nabil Malhotra sir very well, but I would like to introduce Dr. Nabil Malhotra sir. He is senior professor anesthesiologist and the head pain management center at PGI Rohtak. He is the ISA Bhopal Awardee winner for academic excellence in 2015, KPR Young Anesthesiologist National Award in 2009. He has 195 publication and 392 presentation till now. His original work on the submental, tracheal and retromolar intubation was very well appreciated. And currently he is the secretary of the All Indian Society of Anesthesiologists. So I welcome Dr. Nabil Malhotra sir. Before that, I would like to, I want that our few dignitaries, please officially welcome Dr. Nabil Malhotra sir, Dr. D.K. Singh sir. I request Dr. D.K. Singh sir, please unmute yourself and welcome our National Secretary, Dr. D.K. Malhotra sir.
Thank you. Thank Hello. you, Sharad. Thank you, Sharad. Okay, please welcome Molotresser. Yeah, okay. On behalf of the BJSA, we welcome our National Secretary, Dr. Naveen Malhotra sir, to give us the knowledge about our ISA and their different programs. I would also like to welcome Dr. Mahesh, our guest of honor, Dr. B.K. Prasad, special invitee. And I would like now, sir, Naveen Malhotra sir, please enhance our knowledge about our ISA. I request Dr. Naveen Malhotra sir. Thank you. Good evening all. I hope my audio and video are clear. Yes, sir. Yes, sir. Are my audio and video clear, please? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. Right. And if Mr. Anand SK can give me permission to record, I will be thankful for that. And thank you, Sharad. Sharad invited me for a topic. Okay, sir, I said we should always talking about academics, and you are completing 1 year, so why not talk something different? So then we mutually discussed and came to this conclusion of talking about our own ISA, you, me, and ISA, and so we came to this particular topic. And thank you, Dr. D.K. Singh, Dr. B.K. Prasad, Dr. Manoj, Dr. Sharad, all the dignitaries for this, Madam Neelam, and other dignitaries for this warm welcome. And I'm sure Thank you. we shall be able to interact more as we discuss about this particular topic. That is, hello, sir. Can I take 1 second, sir? Can I take Please. 1 second, sir? please. Sir, we have Dr. Anjali Bhure with us. She is our national vice president. So we all welcome Dr. Anjali Bhure, madam. Anjali Bhure, madam, please unmute yourself. Yeah, thank you so much for inviting me. And I think there can be no better person other than Dr. Naveen Malhotra who can speak on ISA, because Naveen is ISA. So a very nice and unique kind of program. Thank you very much. Thank you, madam. Dr. Manoj, would you like to say something, because you are the connecting link between the national and the state? A very warm welcome to our dynamic honorary National Secretary of ISA, Dr. Naveen Malhotra sir, and our Vice President ISA National. She is also dynamic person. I am working with her in ISA Governing Council. So warm welcome to Anjali Bhure madam, and my best wishes for this program. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, Dr. Thank you. Manoj. Thank you, Manoj boss. So now we are going to start the program. All yours, Dr. Naveen, sir. Okay, I bring with myself greetings from Indian Society of Anesthesiologists National Headquarters, and I am Naveen Malhotra, your secretary, not the honorary secretary of ISA National. And today I shall be discussing about Know Our ISA. Whatever I shall be discussing with you today belongs to Team ISA. It's nothing individual, it's a collective teamwork, because it has been rightly said that coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success. If everyone is moving forward together, then success takes care of itself. So we should all work together, and that is the spirit, that is the motto, and that is the aim of Team ISA. The strength of the team is its each individual member, and the strength of each member is the team. So the team and the members, they are interdependent upon each other, and if we work collectively, the results are bound to be different, bound to be good. We got a name now,
ISCNs on the patron of Indians because we require an identity. And we should feel proud to say that I am ISCN. If something is lacking from ISA side, it shall be done to make you feel really proud of being member of ISA and being an ISCN. Everything is now online and is available on www.isaweb.in. But still, I like to highlight, and most an important thing of any association is membership. So now we are the second largest in world. As of today, we are 36,173 members, and our target is to touch 50,000 as early as possible. In the last 3 years, we are making around 25 to 2,800 members per year, and we have seen this growth almost double. And this is because of attraction towards ISA, the more trust on ISA. And you believe me, to be trusted is a great compliment than to be loved. Trust is a firm belief in the reliability, truth, and ability of someone or something, whether it is an individual, whether it is an association. It is a confident belief that ISA will do what is right, it will deliver what is promised, and it will react in the same way, whatever the circumstances, whatever the individuals, whatever the branches. We got around 200 branches now with 28 state branches. The latest deemed to be state branch is the Society of Defense Anesthesiologists of ISA, and around 172 city branches. And all this is because of the office bearers at the state and city level. Also, in addition to the trust and the efforts of the ISA state and city office bearers, the process is also not easy and simple. And I am after the office staff, and office staff is after the applicants to complete the registration process as early as possible. Now, if somebody is tech savvy and has got all the documents ready, he or she can become member within 1 hour itself. Second most important question, which is always asked, especially during elections or near elections, is how to convert from ALM to LM. It is not a difficult task. Just log into your member login panel. Go to www.isaweb.in. On the top hand side, there is member login panel. Put your ISA number. If you've forgotten your ISA number, go to this search ISA member, click here, put your name, Naveen or Malhotra. All the different options will come and you will come to know about your ISA number. Still, if there is any problem, you can always consult the ISA National Headquarters for the clarifications. And once you log into your member login panel, you have to upload your PG degree, diploma or DNB certificate and your registration certificate, and it is done. You submit it and by evening, it will be approved. Another one is common questions. I'm coming to the common question. How to convert from inactive to active? Send your email ID, mobile number, and one ID proof. Your college ID proof, your Aadhaar card, your any other proof you want to send. And send it by email to isanhq@gmail.com. I'll repeat, isanhq@gmail.com or WhatsApp to 9091515151. It's easy to remember, 90 91 51 51 51, and within few hours it will be done. Another common question which is asked is when I am eligible to vote. Now, with this online thing, live membership approved before the date of notification of elections. If somebody's live membership is approved before the date of notification of elections, that means by 20th June, state and city elections, and 14th September, national elections.
The notification for state and city elections comes on 21st June and national comes on 15th September. So if your membership is approved on 20th June for state and city and 14th September for national, you are eligible to vote. There is nothing like that. Your membership will be approved in the AGBM and you will be able to vote next time. With all these technical things and tech-savvy members, we have changed it. And if you become member before that, you are eligible to vote in that particular year. Another question comes is when I am eligible to hold office. For national, you should have at least 3 AGBM register signatures. Maybe attending conference, but not signing the AGBM attendance register, you are not eligible to contest. So 3 out of 5 years, previous 5 AGBM attendance signature should be there. And there are different criteria for a different post. But for holding any office in city or state, you should be a member of ISA for at least 3 years. For higher post, the membership is more. For national post, the membership is 5 years onwards. But holding any office in any formation, city, state, you should be at least member of ISA for 3 years. Some people require certificate and identity card. Everything is online. You log into your member login panel and you can download the colored life membership certificate and identity cards and get it laminated and put it in your certificate file. No need to write to the ISN HQ, we send by courier. You can straight away go to the member login panel and download n number of times, 10 times, 15 times. It is free of cost. Also, there is no charges for conversion from ALM to LM or inactive to active, and also for subscription of IJA. Our flagship journal, Indian Journal of Anesthesia, is doing excellent. PubMed Index journal, and it gives us opportunity to publish our research work, our clinical case material in an indexed journal. You can subscribe for the hard copies between 1st August to 30th September every year. Online access is free for all. And to increase the publishing options, in addition to the 12 issues published by the editorial board led by Dr. Lalit Mendiratta, editor-in-chief, and Dr. Sukhminderjit Singh Bajwa, associate editor-in-chief, the ISA, IJA supplements have also come up. Northern and Central are being published. Northern supplement since 2015, Central since 2017, and Eastern and Northeastern supplement of your own zone will be published in, inaugural issue will be published in May 2022. Another important activity of ISA is holding its national conferences. The national conference this year will be conducted in Shillong, Meghalaya. It will be 69th conference. Last year, we did our 68th conference in a hybrid manner, which was the first ever hybrid conference of any national society at the pan-India level. In ISACON, the life members and ALMs get 50% less registration fees. They have to pay 50% less registration fee than the non-members. And definitely only members get opportunity to present papers, posters, and compete in the award paper sessions. This year, we are also going to have our international conference, 14th International Conference of SARC AA, which is the South Asian Regional Cooperation Association of Anesthesiologists Conference, 12th to 14th August 2022 at Cochin, Kerala. This is hosted by ISA National and organized by ISA Kochi and Kerala. Another important activity of ISA is Family Benevolent Fund. Don't think FBF as an investment. Think it as a social security scheme. It is a good social security scheme for the family members of one of our members who has passed. So we are helping the family members of a deceased member who unfortunately died, and especially for those members whom we lose at an early age. So this is for a partly sum of few hundreds per year. We give
a substantial amount to the family members. And all the details are available on isafbf.in for membership. And it is advocated that we should become members of FBF and help our other members whom we lose, especially those who are young. Indian Association Council is doing excellently well with lots of ISA activities across the country. Compression only life support. Any anesthesiologist can teach COLS. He or she does not require any certification from 8th class onwards to the lay persons, and can even certify that he or she has been trained in COLS. So any ISA member can teach COLS. He or she does not require certification. For conducting BCLS and CCLS courses, which is you have to have undergo a training of trainer course, and these are held online also. And then you can have your certified training centers and teach these activities to the other colleagues also and other medical professional people also. And definitely there are guidelines also on COLS, BCLS, and CCLS, and also regarding resuscitation in a COVID positive patient. ISA is basically an academic body. First and foremost, we have to take care of academics. As it is rightly said, सबसे पहले पढ़ाई लिखाई. So numerous ISA academic programs are going on, and the foremost nowadays is ISA online PG classes. COVID has shown us to be flexible. Every Monday, we are holding ISA online PG classes, which are viewed all across the country by the postgraduates and also young consultants, private practitioners also, senior persons also. And those who are not able to see, they watch the recordings on the isaweb.in or our ISA YouTube channel, ISA NHQ. And they generate thousands of hits. And our monthly report is that more than 50,000 viewership hours, more than 50,000 viewing hours are there for ISA NHQ YouTube channel. And the primary viewership is of our online PG classes. If somebody from your state is also interested in taking these classes, he or she is most welcome. Some of you have already taken also. Thank you for that. Also, we have been issuing ISA advisories, especially during the COVID pandemic. How to initially manage the COVID pandemic patients, COVID patients. Then how to set up COVID OT. Then we had challenges of the second wave. How to manage mucormycosis patients. How to generate more oxygen, more avenues for oxygen generation, and subsequently patients, how to manage patients who are post-COVID coming for surgical procedures. So and I must compliment ISA National Task Force on COVID, which meets almost every week regularly to devise, discuss, and then formulate the advisories. Also, the scientific program at the national, state, and city conferences is designed for academics only, whether it is CME, whether it is workshops, whether it is the conference deliberations. We also have ISA online PG quiz, which was started last year, which was a runaway success. You may participate in quiz, but your mind is sharpened. You come to know about one question, but 4 different answers. So if there are 50 questions, you learn about 200 questions. 3 which are wrong, you learn about that also. And soon we are going to start our ISA online daily quiz on isaweb.in. Also, we have got ISA sponsored CMEs, ISA sponsored workshops, research methodology workshops going on. And PG assembly, 1 PG assembly per zone. There are 6 zones. So we sponsor them. For CME, 1 lakh grant is there. For workshop, up to 1 lakh grant is there. For PG assembly, a grant of 1 to 2 lakhs is there. If it is online, the grant is 1 lakh. If it is a 2 days, grant is 1.5 lakhs. And if it is 3 days, grant is around 2 lakhs. And at times we permit more than 1 PG assembly in a zone also. Because it's a COVID time, it's difficult to travel from one state to other. So
we are a bit flexible as far as academics is concerned. And then we are holding regular national webinars also. In addition to national webinars, there are state and city webinars also going on. And like this, Bihar, I must compliment that in last COVID pandemic and last 1 year, your team has done exceptionally well. And I've been viewing the program. I've been participating in 3 to 4 programs myself. Even the online quiz, I'm happy to share. Abhyuday Kumar was picked up from one of the online quiz which I attended on this platform. So we are focusing on strengthening academics at all levels. And yes, anybody, any branch can apply for ISA sponsored CME workshop or research methodology workshops or PG assembly. For CME and workshop, the city branch office bearers have to apply to ISA and HQ, and usually it gets approved principally immediately, pending formal approval by the governing council. PG assembly usually decided at the zonal AGBM, because there are different states involved, and usually in rotation, like this year it is your own zone has approved it for West Bengal. Webinars, earlier they were, because it was done by the national only, but with COVID now, almost I'm very happy that each state is doing it. And with this third wave coming on, again, more states have started doing first and third Sunday, first and third Saturday, or every Sunday, or every fortnightly. And the master classes, they are all runaway hit in different parts of those particular states, and also among other states also. We've done so many national webinars on COVID, first wave, second wave, post-COVID, mucormycosis, oxygen supplementation, webinars with Royal College of Anesthesiologists, and definitely the state and city webinars are being conducted. So ISA academics is getting strengthened by leaps and bounds at city, state, and national level. So foremost, our focus is on academics and clinics only. And as I was talking about National Task Force on COVID, must place on record good work by all the members, and there are members from all states. From Bihar, Nishant is participating, Nishant Sai is participating actively, and from West Bengal, Arpan is Arpan, Sujata, and Sarbri Swaika madam, they are all participating very regularly. Also, ISA guidelines. We have to design guidelines for Indian perspective also. So we have COVID advisory and position statements, ISA fasting and feeding guidelines, and ISA IRC COVID guidelines. Private Practitioners Forum. A good chunk of ISA members are private practitioners, and in private practitioners who are freelance anesthesiologists. So freelance anesthesiologists need the maximum support because they are working individually at remote locations with not so good backup. So PPF guidelines have been formulated, which were discussed and vetted by senior anesthesiologists, academicians, and clinicians. And very nicely, ISA PPF is going on with guidelines focusing on minimum mandatory standards in operation room, PAC, consent and anesthesia record keeping, and remuneration based on RVG system. Yes, some things have been achieved, but some more will be achieved in due course of time. We have started an ISA all by myself award session, which is exclusively for persons who are working singularly. And also we are working on separation of anesthesia charges from the surgical fees or the total package. And we are in liaison with discussing this with PPAs and central and state government health services schemes. UISA. This is very close to my heart, and because we have to prepare our next generation. These are the doctors who will be treating many of us, who will be anesthetizing many of us. So we have to prepare them in all aspects. So this UISA focuses on members
with age 40 years or less, or within 10 years of post-graduation, whichever is less. And it includes all postgraduates, senior residents, young consultants, and private practitioners. This year, we're going to conduct second Yuva ISOCON, which is the second national conference and first international conference of Yuva ASA. It is proposed to be held physically on 30th April and 1st May at Rohtak, Haryana. Also for young anesthesiologists, we have got ISA Dr. B.B. Mishra Young Anesthesiologist Award during ISOCON, Dr. M.T. Bhatia Young Pain Physician Award at ISOCON, ISA Trainee Talent Award exclusively for postgraduates at the during ISOCON, and ISA Online PG Quiz, ISA Neon Inland and International Fellowships. Within once this COVID third wave settles down, we will have examination for this Neon Inland and International Fellowships. This year, because of COVID restrictions, we will be having inland fellowships also only, but international we will be avoiding. But the number of inland fellowships will be increased. We are also having our ISA Ludhiana Best Poster Award and Traveling Grants, and late Dr. T.N. Jha Memorial and Dr. K.P. Chansoria Medal and Traveling Grants during the ISOCON. And though money does not matter, these all awards carry certificate and medal, but also the prize money has been also substantially increased in last few years. We also have our ISA endorsed insurance schemes. ISA is a clinical and academic body. It does not sell insurance. We are not made for that. But we have endorsed insurance schemes for the benefit of our members and tried to strike a good deal on professional indemnity, health insurance, including COVID care, and latest being including monoclonal antibody therapy, which is also covered in the COVID care. And last year, we also had our COVID death insurance. Our ISA legal cell is working regularly, and we are a team of lawyers is giving us advices also. And we are talking about latest being NEET super specialty eligibility criteria for critical care medicine. We are insisting that, like previous years, whenever any anesthesiology residents appear in critical care medicine, the pattern should be same, that he should face 40% questions from anesthesiology and 60% from critical care medicine, and not the proposed one that 100% questions will be from general medicine. We are also having our court case going on in Kerala, NEET super specialty, eligibility of anesthesiologists for cardiology and other subjects. We also fought against NV starting diploma in anesthesia course again, but we could not succeed because our students, we could not convince them. They were after this that our postgraduate seats will increase. We are ready to do diploma also. So the MBBS students, they wanted more increase in these seats. So that's why this diploma anesthesia courses have been started again by NVE. Numerous court cases we give advice confidentially. I won't be sharing the examples, but there are many examples where members do talk to us in confidence, share their problems, share their legal problems, and we give them advice purely on legal basis, maintaining utmost confidentiality. And they say, yes, we can look upon ISA for a genuine and reasonable advice. There can be morbidity, there can be mortality, there can be imprisonment, there can be anything. We are always there for our members. And I can tell you my own experience. If you receive a call regarding any legal advice, it takes at least 1 hour to listen to the member properly and then subsequently advise that member. Because you have to understand what that member is going on. First, you have to console him. Don't worry, things will settle down. Then you have to motivate him, that you have to face the legal challenges, and then ensure that he or she gets a proper legal advice also. ISA advocacy is going strength day by day, gaining strength day by day. We are interacting with regularly with World Federation for Society of Anesthesiologists, and I'm happy you also know that majority of our advisories are published on WFSA website. We are interacting with Royal College of Anesthesiologists. We are an active leaders in SARC, AA, regularly in touch with Indian Medical Association,
Indian Society for Critical Care Medicine, OMAG, ICHA, FOGSI, and IOA, so that we work together with different associations, and ISA is visible more, ISANs are visible more. Regularly publish our e-newsletter, the ISANs, which are all the activities of ISA National, ISA State, and city branches, and they are published. Herein I'll request the city branches also and the state branches also to send a formal email, because WhatsApp messages, the quality is not good. To publish in the newsletter, the pictures, they get compressed. So if you send a formal email to isanhq@gmail.com, your activities will definitely be published in the ISA e-newsletter. Moving from academics and clinics, we're also focusing on the other talents of anesthesiologists, especially the cultural club and the art and literary club. And I'm very happy to share with you that our ISA cultural club has been doing very nice in the last 3-4 years. Earlier, Dr. Manoj Kumar was also the program head. Now Dr. Anjali Bure is the program head along with Dr. Rekha Das. And the latest being our cultural club video on Republic Day, whether it is Republic Day, whether it is Independence Day, Holi, Diwali, New Year, and our cultural club members will come up with one or other performance. And even the COVID appropriate behavior was nicely shot by our ISA cultural club members. So those of you who are having these skills, you can just get in touch with me or any of the program heads or coordinators. They will put you in those WhatsApp groups where all these activities are going on. Art and Literary Club, we had first art and literary exhibition at the ISA national level during the ISAPON 2021 at Ahmedabad, and people show the skills in art, writing poems, skill, photography, and you are all welcome to join them. Innovations, ISA is promoting innovations. If somebody comes up with new innovation, he or she is taught how to publish it, how to get it patented, and how to get it marketed. Because if you have innovation and you just put it on social media, it will get, somebody else will take over your idea. So we guide how to work about it, how to get it patented, and then subsequently how to market it. Fit Anesthesiologist campaign. This is very, very essential, whether it is the physical health, mental health, spiritual health, substance abuse, or suicidal tendencies. We have to listen to our colleagues, our postgraduate students, and ensure that we always talk about case fit hai, nahi fit hai. Patient is fit for surgery or not fit for surgery. But we have to think about whether our own colleague, the anesthesiologist, is fit or not. So this program focuses on that particular thing. If you can just give me a break for a minute to have a glass of water, please. ISA social outreach program. Public will remember you if you give something to public. You have to do something for public, then definitely they will give you recognition. And for that, we are doing regularly compression-only life support programs across the country, Environment Day celebrations, and public awareness programs, as it was done on 26th January. I'm very happy to share with you, 26th January, 10 a.m., all across the country. This videos in Hindi, English, and majority of the local languages, they were released on the social media platform of Facebook, WhatsApp, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, and the reach to the public has been massive. They were in Bengali, they were in Odia, they were in Hindi, English, Malayali, Telugu, Marathi, and other local languages also, Punjabi, Haryanvi, and Rajasthani, Gujarati, and these were there. Yes, here Bihar and Jharkhand, Sharad, your team lagged, and I didn't see any program from any of your branch, but maybe you can cover up subsequently. And this our ISA public awareness flyer
about the anesthesiologist and about the anesthesia. They are regularly circulated to all the branches. Once again, they will be circulated for translation into local language. ISA HOD Club. I've renamed it as HOD Noble Club. And usually the images that HODs are very khadoos, very strict. So once I have become HOD, so I have renamed it as HOD Noble Club. And there's a vast pool of past and present heads of departments all over the country. And we want this to be a platform where we can have the advantage of their wisdom and their experience. And they should lay stress during the postgraduate teachings in the classes that how to do private practice. What are the do's and don'ts? We never teach our postgraduates do's and don'ts of private practice. Everybody won't be a senior resident of our institute. Everybody won't take a faculty position. And we should invite our practitioners of the city to give lectures, office bearers of ISA of that particular city branch, to give lectures in the classes, in the medical colleges, how to do private practice. And also, either the HODs or their consultants in the departments will be from the medical boards. So they can guide the departmental juniors that if there is any complaint against anesthesiologist, please be reasonable and try to help. Definitely on the basis of record available, that do write there is no medical negligence. If you write this thing, then that anesthesiologist is absolved. Yeah, I'm not very happy to share with you that this program, ISA Vigil, this was formed to keep a track on social, electronic, print media about if anything is written bad about ISA, to keep a track on that. So I am happy also that this program is not working. There are two very senior GC members looking after this program, and their report is almost always nil, that they don't have anything to report which is said or written against ISA in social, print and electronic media, and that members are loving ISA, members are loving ISANs, and members are loving state, city and national office bearers. ISA financial advisor. It is about having a legal second source of income. I'm not talking about second source of income. You can have agricultural land. We all know that it is income is very, very good and tax free. You need advices on financial investments, partnerships, and real estates. Money begets money. So we need to have legal second source of income. And it is not that we anesthesiologists are doing it. All are doing it, whether they are surgeons, radiologists, gynecologists, they all invest, and it is always better to have a second source of income. Then you won't fight about this petty, I will get the case done in 2800, okay, I will get it done in 2700. You will say, I will not get it done with less than 5,000. You do not anything. So if you know that you have got money coming from other things, your stress on coronaries will be less, and you won't be fighting for such petty things. ISA mentorship. You take my word, your postgraduates are best spokesmen of your department. If you want to know about anybody, talk to the second year postgraduate. He will in 2 lines summarize each and every consultant. He or she is like this, she is like this. And that will be the conclusion of the thesis. So we have to invest in our postgraduates financially, socially, and personally. We have to do mentorship. Few months ago, I received a phone call at around 11:30 from my young postgraduate. Sir, I am in police station. Sir, Thane mein hu. So I said कि मैं आ तो जाऊंगा, पर the girl with which you are, will she support you? क्या सर आपको कैसे पता चला कि मैं थाने में हूं तो मैं किसी लड़की के साथ हूं? मैंने कहा भैया रात को भजन तो कर नहीं रहे होंगे. But there you go there,
Take care of your doctors and show that we are there for you in all circumstances. And this can happen with anybody. So we have to mentor them socially also and have faith in them. But more important is that we should mentor them clinically also, academically also, and research also. For that, we have got our mentorship academy. Moving on to ISA awards and nominations. Herein, I like to have the interest of all the office bearers also, because there are some branch awards also and all the members also. Please visit www.isaweb.in, ISA awards and nominations, and apply before the cutoff date for different categories. Rules and regulations are all downloaded in download fashion, whether it is Dr. Y.G. Bhojraj Award, ISA Bhopal Award for Academic Excellence, Dr. A.P. Singhal Lifetime Achievement Award, forget about this 2021, Dr. Mrs. Rukmani Pandit Award, ISA Shashi Chandra Award, ISA Innovation Award, ISA OM 1 Minute Award, ISA Trinity Talent Award, ISA Dr. B.B. Mishra Young Anesthesiologist Award, ISA All by Myself Award, Dr. M.T. Bhatia Young Physician Award, ISA Jaipur Award, Dr. Cobbs Award. Jaipur Award is in 3 categories: daycare, airway, and post-operative pain relief. Cobbs Award is in 8 categories: cardiac, neuro, obstetrics, pediatrics, private practitioners, pain, and so on and so forth. Trauma and critical care. Dr. Venkat Rao Oration, East Naraini Best Poster Award, and ISA Gold Conference. So there are so many awards to be won. Prize money also, medals also, and prestigious certificates also. And for the branches, there are Best City, State, and Metro branch awards. This year, ISA Bihar and Jharkhand won lots of awards. Public awareness awards for individual and branch levels. World Anesthesia Day Award at city, state, and branch levels. Membership Drive Awards, Proficiency Awards, and Compression Only Life Support Activity Awards. And obviously about this best poster and traveling grants of Dr. T.N. Jain, K.P. Chansuria. For the needy students, we have started ISA Educational Scholarship. This was approved in 2019 AGBM, but because of COVID could not be implemented. So it is a maximum grant of 20,000 INR per candidate, and total grants available per year are 20 to help the deserving ISA members. Now, what are these deserving ISA members? This is purely on the wisdom of the ISA city and state branch, because we shall accept recommendations and applications which have got recommendations from local ISA or city or state branch. And then we will subsequently approve in the ISA National Governing Council, whether it is for paying the college fees, purchasing books, registration for conferences, life membership registration of ISA or FBF. This is all included. And it is a matching grant. If we pay 25,000 rupees, then 25,000 has to be paid by the member or city or state branch, so that there is equal partnership. So I request you to take the opportunity, and whosoever you think they are deserving, send their applications to isa.nhq@gmail.com. We are soon coming up with ISA skill centers for improving the clinical skills. I know majority are already skilled, working alone without much support, but still many private practitioners, many junior residents, many young consultants have approached ISA that we are lacking in this particular clinical skill. Suppose somebody says, I am not good in iGel, I'm not good in fiber optic bronchoscope, I'm not good in USG guided blocks, or I'm not good in any brachial plexus block, where I can learn and enhance my skill. I have never used this particular drug in practice, but I want to see. I have not done pediatric cases in last many years, but I want to do. So we will be giving this opportunity in these ISA skill centers, because ISA believes that all our ISANs should be good doctor, and a good doctor should be able to observe, record, tabulate, and communicate. Use his or her 5 senses and at times 6th sense also. Be transparent and informative. Be honest, confident, and caring. And he should be competent in knowledge, social, and communication skills, and show respect to seniors and the patients alike.
And if you want to learn from the skill centers, then you should disappear for a while. You have to leave your practice, you have to take leave, then only you can learn something. And it is rightly said, if you want to be successful, you have to be willing to disappear for a while. These are very much appreciated. Our e-calendars last year also we said it, and they have been circulated and will be circulated to all members. All important dates of ISA activities are there. And yes, I can put only few pictures, but whenever possible, we'll have pictures of more doctors also. Our ISA app and national registry is ready, and we will be having our regular activities on this very, very soon. We have been able to complete our important mission of starting FNB pain medicine. It has been already notified by National Board of Examinations. As a convener of National Board of Examinations, Specialist Board of Anesthesiologists, I see it as my personal achievement also, because it's my area of interest also. So in next NEET super specialty exam, FNB pain medicine will be a subject. Something more, I intentionally never put this ISA logo on this particular slide, but it is requested. Please don't use, I'm not saying abuse, these substances only with the persons you are familiar with, and do not post pics with glasses on Facebook and social media, because your patients, your relatives are also on social media, and they can never accept doctors to smoke or use substances. We are not saying that this is something moral inspectorship, that drinking good is bad, and that those who do not drink are saints. No, it is not like that. And as a National Governing Council, we have taken this decision that all the ISA office bearers will not put pictures with glasses in hand on Facebook and social medias. And during these meetings, if such things are there, they will be sponsored exclusively by their own pocket. There will be no burden on the organizing committee. And all this, you never have seen these high-profile social media personalities having such glasses. You can have that in your drawing room, but don't put on the Facebook or social media. Another important aim is to make ISA a non-political organization. ISA should be what is in the preamble. Preamble is that it is an academic, clinical, research, and social welfare body. And there should be no regional divide, east, west, north, south. So we're working on it to make it a totally non-political organization dedicated to academics, clinics, research, and social welfare. One thing which I have worked on the principle is, please never request me, don't do his or her work. You can request, do my work. So I am never do send me a call कि उसका ये काम मत करना, नहीं, मेरा ये काम कर दो. I go on that particular principle. Because it is, as an association, it has been rightly said that it is easy to dissociate and difficult to associate. So to maintain relationships is difficult, to break away is very, very easy. And in union, there is strength. United we stand, divided we fall. ISA is also working on ISA's own physical status grading. We have been taught about ASA physical status grading. We are working on ISA physical status grading, ISA virtual museum, Indian history of anesthesia, history of ISA and its branches. I request you, please start compiling the history of Bihar and Jharkhand ISA and send it to ISA National as early as possible. If you want to have some pictures for virtual museum, you can contribute to that. Soon we will be having inauguration of our ISA registered office at Chennai, which is in final stages. And definitely we are promoting ISA branch offices also. We are lucky that you got a branch office at Patna in IMA Hall, Cochin, Nagpur, and they have got their own offices. Delhi has got its own office, and UP is soon coming up with its own office, ISA UP House. So it is promoted and motivated that all other branches should also have their own offices where they can sit and interact regularly and plan. And we are also working on with the NMC on renaming it our branch as anesthesiology
from anesthesiology to anesthesiology and critical care. Very happy to say that we all are lucky with God's grace that we are in our Platinum Jubilee, and all these activities are planned as a part of ISA Platinum Jubilee celebrations. We were formed in 1947 and we are in 2022. Just like our country, we are celebrating Amrit Mahotsav, and you are requested to do n number of activities at your state and city levels, and we will definitely support them in all possible manner, including the financial support. To summarize, for recognition of work, quantity is important or quality is important? Please run after quality, quantity will automatically increase. Do quality work, you will get recognition. Have passion. Always keep on thinking what to achieve. Dream day in and day out that I want to achieve this. My day starts at 5:30 a.m. in ISA office. And at times it goes until 10:30. Yes, I am a busy clinician, but still, when load is more, even I start thinking at 2:30 a.m. and come to the office. It is just one floor below my residence. But keep on thinking what you want to have. Have passion and you will get it. But there is only one requirement. Intent should be good. Result will always be good. I am guided with ISA logo in my back. I feel that ISA logo is just observing me, keeping a watch on me. And I got Ganesh ji and Mata Vaishno Devi in my front, who are blessing me to do the right thing. Because when you sit on this chair, you want to do the best. You don't want to do anything wrong. So have a good intent. The results will definitely be good. And there are 3 mantras to success. Honesty. It is the first chapter in the book of wisdom. Be honest with yourself and with everybody. It was, and will always remain the best policy. Whatever the commercialization may come, whatever the consumer may come, honesty was, is, and will remain the best policy. The second mantra is sincerity. The secret of success is sincere. You have to be sincere to yourself, to your members, to your association. And there is no substitute to hard work. Success is sweet, but the secret is sweat. If you want to shine like a sun, first burn like a sun, as was rightly said by our past President APJ Abdul Kalam. Work hard in silence and let success mix the noise. And for the team, because it's a teamwork at the national level, at the state level, and at the city level. To succeed in your mission, you must have a single-minded devotion. You must have a single-minded devotion to achieve your goal. Because excellence is a continuous process and not an accident. You have to be working passionately, continuously, with honesty, sincerity, and keep on working hard. सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो मन में हो खाक उसे मत तोड़ना, हर कदम पे मिलेगी कामयाबी तुम्हें, हर कदम पे मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस सितारों को छूने के लिए कभी जमीन ना छोड़ना. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Very nice presentation. Manoj. Thank you, Dr. Manoj. Yeah. Thank you, Naveen, sir, our national secretary. Thank you, sir, very much. Manoj. बच्चा सब का मीटिंग क्या? Sir. Manoj, please go ahead. शरद सर नहीं चलेगा क्या our moderator? And Sharad, Navi. Anybody has any questions? Most welcome. Yeah. Anybody? Good evening, Dr. Naveen.
Good evening, Dr. Sharad. Good evening, Dr. Dr. Jordan. Dr. Jadan. Jordan sir, बोलिए. Dr. Jadan. Hello, Yeah. good evening everyone. Hello. It Good was evening, it everyone. was Hello. बोलते हैं ना सुपर से भी ऊपर वाला presentation था Dr. Naveen. It was excellent, and so many things. Even being in the ISA for donkey years, we didn't know. Now my question is related to the guidelines. The subject of guideline, many guidelines we have seen and now developed from the ISA. So the topic all so were done are very relevant, but few things are missing. So what is the protocol to set up a guideline? How is choose people who can initiate and can lead, definitely be a life member of ISA? What is the protocol? Because something coming in my mind, how can I coordinate with whom and then go ahead? So this is my question. Sir, very important and practical question. We got a ISA guidelines committee, which is headed by the ISA chairman academic committee. So right now work is going on almost 8 guidelines. Fasting and feeding have been published in IJA. Rest 4 are going on monitoring, on investigations, and 2 are in pipeline stage. If you got some idea, just write to the National Secretary. See, National Secretary is the corresponding point for everything. All the correspondences are to and from the National Secretary. The confidentiality will be maintained and your idea will be preserved. Usually guidelines, there is a set protocol of formulating the guidelines, on which pattern they have to be developed, how many sittings they have to be there, all the research questions they have to be formulated, and then they have to be discussed individually, each question, based on the literature available, Indian as well as international. So if you got any idea of formulating guidelines, you just write the title which you want to work. If no work has been done or is not going on that particular topic, that will be okay. And then you have to finalize the brief project report, what you want to do in those guidelines, brief research questions, and usually if it is relevant, if it is coming from academicians and clinicians like you, it will get approved. And there is some financial support also for that, though nowadays we are meeting online, but still we need some expenditure for the statisticians also, and other meetings also. 1 or 2 physical meetings may be required subsequently. So financial support is also given by ISA. So if something comes to your mind, just write a brief proposal to the ISA Secretariat, and it will be principally approved and subsequently usually communicated. And then you will have to expand your team, whom you want to involve in these questions. And there will be definitely ISA Academic Committee Chairman will be moderating it along with you. And because it has to be a ISA guideline, so it will follow that rigid process. Usually it takes 9 months to 12 months, 9 months to 1 year to formulate a guideline, because in between work gets slowed because third wave has come, so work gets slowed, or last time second wave, 3 months no activity could not be done. But yes, if you are interested, please submit a brief proposal to the ISA Secretariat. It will be taken to a logical conclusion. Am I okay, sir? Thank you very much. It is quite elaborated and very clear. Thank you so much. Right. सर ये आवर ISA है, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, आवर ISA टॉपिक ही मैंने यही रखा था, और मैंने शरद ने मेरे को इंट्रोडक्शन में मैंने कहा था, मुझे हमारा सेक्रेटरी कहना, ये हमारी ISA और मैं आपका ही सेक्रेटरी हूँ, ठीक है ना? तो आप कोई चीज प्रपोजल लाओ, उसको मेरा काम है उसको अमली जामा पहनाना, हाउ टू गेट इट डन as per the protocols and rules and regulations. Hello, can I come in, sir? Can I come in, sir? Yes. Hello. Sharad बोल रहे हैं, sir. Thank you very much, sir, for wonderful lecture. Lots of information in a very crisp manner, as you always say. छोटा रखो but अच्छा रखो.
तो बहुत कम समय में हमारे मेंबर्स को सर ऑल द डिटेल्स वी आर नाउ knowing that you are running, so we are running so many activities at the national level, and the aim of this CME workshop is to implement these activity and start doing these activity at our state, Bihar and Jharkhand. So you will be happy to know that we have formulated, we have discussed among ourselves, and we are coming with the committee, all the committee. In the next 10-15 days, we will have this committee on paper about all this committee, like the sports committee, fit committee, legal committee, finance committee, culture committee, so many activities. So we have already discussed with the concerned chairperson, and we will form a team in the next 5 to 10 days. And in the next, by the end of this February, we will be on the floor. So just I want to know about your experience, how you started, because I know there will be so many hurdles in starting, because we don't know many activities like the legal, suppose. So suppose a legal chairman, I would not take the name of that chairperson right now, but suppose he is in the meeting or she is in the meeting, how he will proceed, sir? Can you guide us in something? सर सबसे पहले तो लीगल बंदा का चेयरमैन वो होना चाहिए, who should have some legal knowledge, who should not be afraid of going to police station. थाने में जाने से डरना नहीं चाहिए. आपको अगर लीगल कमेटी का चेयरमैन बनना है, then you will have to go to the police station, you will have to go to meet the as junior as ASI से लेके SP तक. Your visiting card should be bold enough that I am president and secretary of this particular branch, right? And you should be not afraid of going to, you should not be nervous. जब आपका कुलीग वहां थाने में बैठा, होता क्या है जब लीगल प्रॉब्लम होती है, द पुलिसमैन सिंपली सेज, डॉक्टर साहब आप थाने में बैठ जाओ, क्राउड से आपको बचा लेंगे. एंड क्राउड को वो कहते हैं कि हमने डॉक्टर साहब को बिठा लिया अंदर, ठीक है, अरेस्ट दिखाते नहीं है पर हो जैसा जाता है. तो यू विल हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशंस आल्सो, देन यू विल हैव टू फाइट द लीगल केसेस आल्सो. लीगल केस के अंदर डेफिनेटली nowadays professional indemnity is very very good option. Whether you are in government job or whether in anything, आजकल के जमाने में it is always to better to have a professional indemnity of 1 CR, because इतना cost of legal costs have gone up. So 1 CR professional indemnity costs somewhere around 9,000 10,000 rupees. So you should have it. Third, if somebody asks some legal opinion from you and you help through the legal thing, please confidentiality should not be maintained. आप don't discuss that thing in group कि उसके साथ आज उस केस में ये हो गया. These loose talks कल को उसके अगेंस्ट काम आएंगी. Never ever कभी भी आप, if any colleague has some problem, difficulty, morbidity, mortality, support him and just keep quiet. Don't discuss the technical things in public because they will be used by the opposite party. You may have to sit in the mediations where out of court settlements will be done, where you have to preserve the dignity and respect. See, as a doctors, we are not worried about money. We are worried about dignity. आधा डॉक्टर तो बेइज्जती से मर जाता है कि मेरे, पहले तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट तो यूं परेशान हो जाता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम ही क्यों हुई, पेशेंट को कुछ हो ही क्यों गया, और पेशेंट की डेथ हुई तो बेचारा वैसे ही परेशान हो जाता है. एंड अगर कोर्ट केस हो जाए तो और जीते जी मर जाता है. सॉरी, आई एम गेटिंग इन हिंदी. एंड मनी की उसको चिंता नहीं है. सो वी हैव टू एंश्योर दैट हिज और हर मोरल इज हाई एंड डिग्निटी इज प्रिजर्व. डिग्निटी प्रिजर्व करने के अंदर आपको उसको क्लिनिकली भी, वी हैव टू सपोर्ट दैट मेंबर क्लिनिकली आल्सो एंड लीगली आल्सो. तो लीगल कमेटी में लॉयर्स के बच्चे या जिन्होंने थोड़ा BLL भी साथ पढ़ रखी है, या जिनका लीगल बेंट ऑफ माइंड है, जो थोड़े दबंग हैं और जो अपने कोलीग्स का फन नहीं बनाएंगे, उनकी वीकनेस को अपॉर्चुनिटी नहीं मानेंगे उनको, और जो क्लिनिकली भी साउंड हो कि भाई आपने जो किया ठीक ढंग से केस मैनेज किया, डोंट वरी, गलतियां तो सबसे हो जाती हैं, तो उनको लीगल कमेटी में डालना. साल में 1-2 मौके ही आएंगे. मैं तो कह रहा हूँ लीगल कमेटी काम ही ना करे, सब केस, सब पेशेंट सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो लीगल कमेटी को काम ही ना करना पड़े. ये प्रार्थना है प्रभु से. पर जो हो वो दबंग लोग हो, कानून जानते हो. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Now, just a second, Manoj bhai. You can disagree with me also. अगर आपको लगता है कि मैं ये बातें मैं बात करूं, I am talking what I have been doing since last 25 years.
मैं आई विल बी नॉट टॉकिंग थ्योरेटिकल, बात ही नहीं करूंगा मैं, आई वोंट बी टॉकिंग एनी थ्योरी। आपको वहां जब सेटलमेंट होती है आउट ऑफ कोर्ट नेगोशिएशन, इट इज सेड इट इज ऑलवेज बेटर टू बाय पीस, इफ यू कैन बाय पीस बाय इट। बट जब नेगोशिएशन करने जाते हो तो वहां पे 10 से शुरू होते हो और सेटल एट 1, so you have to know that art also. Right, sir. Thank you, sir. So now I request our members, if you have any question, please raise your hand. We will call your name and you can ask our national secretary your query, your question. Please just raise your hand or unmute yourself, and so he can listen easily. कौन बोलना हेलो चाहता है? शरद बॉस, दामोदर बोल रहा हूँ। Yes, Dr. Damodar. He is the secretary of the Darbhanga city branch. Dr. Hari Damodar sir, please ask. Hari Damodar sir, please ask your question. सर, नवीन सर, हमारे ब्रांच के कुछ मेंबर्स को हार्ड कॉपी आईएसए जर्नल का इशू है। हम लोगों ने पिछले 4-5 सालों से वो जो टाइम फ्रेम आपने बताया है अगस्त का, उसमें अप्लाई किया। महेंद्र सर से मैंने बात भी की, लेकिन हमारे ब्रांच में कभी भी हार्ड कॉपी नहीं मिला। ये 3-4 सालों से हो रहा है। हम लोग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका Sir, related to this, एक सिंपल sir, सा तरीका है related to this, नहीं, I will also add a point. Yes, डॉक्टर sir. नीलम मैडम, डॉक्टर दामोदर सर, यस सर। आप अपने डाकिया को होली दिवाली पे 100 रुपए देते हो कि नहीं देते? हाँ नहीं सर, मेरा घर तो डाक खाने के ठीक सामने है। नहीं, आप जब तक उसको होली दिवाली के ऊपर, सर होली दिवाली देता हूँ सर, देना सर, आपके घर पकड़ा के जाएगा। होता क्या है कि सर ये बल्क में आते हैं सर, और बहुत सारे जगह पे देखा गया जहाँ पे ये पोस्टमैन उसको रद्दी में फेंक देते हैं सर। क्या ये कंफर्मेशन मिल सकता है कि हमारे नाम से आया है? ये किसी तरह का एविडेंस मिल सकता है कि क्या पोस्ट दरभंगा में एक भी जर्नल हुआ है? सर ऐसा है कि मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अपने हेडक्वार्टर से आपको भेजता हूँ और फिर देखिए मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि सर, आप ट्राई कर। दूसरा क्या होता है कि सर ये जर्नल पोस्ट होता है मुंबई से, इसमें एडिटर ने, सेक्रेटरी ने कुछ नहीं करना होता। एक पोस्टल एड्रेस उनके पास पहुंच जाता है लिस्ट। पहला बात तो आपका नाम होना चाहिए उस लिस्ट के अंदर। वो नाम आप मुझसे नेक्स्ट 2-3 दिनों में वेरीफाई कर लेना कि आप लोगों के नाम है कि नहीं है दरभंगा के। मेरे पास लिस्ट रहती है, एडिटर से लिस्ट मेरे पास भी आ जाती है कि ये लिस्ट है। एक तो उस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको पहुंचना चाहिए। फिर पब्लिशर एक हमें फ्रैंकिंग लिस्ट देता है कि मैंने इतने जर्नल इस महीने में पोस्ट किए, तो वो पोस्ट होते हैं। मुंबई से निकल गया, दरभंगा में डिलीवर ना हुआ, उसका कारण लोकल पोस्ट ऑफिस में कई बार मेरे पास भी नहीं आया, तो मैं पोस्ट ऑफिस गया तो देखा वहीं पड़ा हुआ है, वो इकट्ठे पड़े होते हैं, फिर वो रद्दी में फेंक देते हैं। सर हम लोगों ने ये फॉलो अप किया दरभंगा मेडिकल कॉलेज में, मैं हूँ छोड़ी, और हम लोगों ने कहा कि कम से कम एक डिपार्टमेंट के नाम से आप दे दीजिए सर, उससे भी मेरा काम चल जाएगा। एक बार तो लास्ट रिक्वेस्ट मैंने ये किया, लेकिन पोस्ट ऑफिस में भी पता किया, पीजी भेजा, और एकदम कॉन्फिडेंटली कर सकता हूँ कि डाकिया मुझे पहुंचाएगा। हाँ, लेकिन वो आज तक नहीं पहुंचा। पिछले 3-4 सालों से मैं ये कर रहा हूँ। सर देखिए, आप इस चीज को चिंता मत करिए, वैसे काम ये पब्लिशर का है, बट मैं आई विल एंश्योर, अगर आप मुझको कल एक अपना पोस्टल एड्रेस भेज दें कि मुझे इस पोस्टल एड्रेस के ऊपर आईजे चाहिए, तो मैं उसको मंडे को निकाल दूंगा हेडक्वार्टर से। आपके पास पहुंच गया तो फिर हम पब्लिशर की क्लास लेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, ये कोई बड़ा काम नहीं है सर। जस्ट वन जब आपने एक बार डाला था कि आईजे की हार्ड कॉपी के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं, तो उसमें जब हम लोग ऑनलाइन में जाते हैं तो उसमें अपडेट प्रोफाइल का आता है। बहुत सारे लोगों के प्रोफाइल इनकम्प्लीट है, और जब हम वो प्रोफाइल अपडेट करने की कोशिश करते हैं सर, तो वो फॉर्म इनवैलिड बताता है। जो भी हम डेटा डालते हैं, व्हेन यू सबमिट इट, इट बाउंसेस बैक टू द प्रीवियस ईयर and you are not able to update your profile. मैम आपका ये जो पॉइंट है बिल्कुल, मैंने ये प्रोफाइल खुद भी चेक किया। वो प्रोफाइल के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। yes, आपने कब एमबीए किया, उसके लिए मैडम बड़ा सिंपल सा है, एक नंबर याद कर लो, 90, 91, 51, 50। लिखो मत नहीं लिखो मैडम, मत लिखो प्लीज। yes सर, याद हो गया। 90, 91, 51, 51, 51 याद हो गया। उसको एक मैसेज लिखना
एज डिस्कस्ड विद प्रोफेसर मल्होत्रा। यस। उसकी टॉप लाइन ये होनी चाहिए, हाँ। एज डिस्कस्ड विद प्रोफेसर नवीन मल्होत्रा। ये मेरा कोड वर्ड है अपने स्टाफ के लिए कि अगर ये मैसेज आए ना कि एज डिस्कस्ड विद प्रोफेसर, जहां प्रोफेसर नवीन मल्होत्रा जुड़ गया ना, वो काम वो खुद करेंगे अपने हाथ से और मुझे रिपोर्ट करेंगे कि ये काम हमने कर दिया। तो वो मैडम ये काम हमारा डॉक्टरों का नहीं है, हमारा काम है प्रोफाइल अपडेट करना, ऑफिस वाले बच्चे करेंगे। वी आर क्लिनिशियंस, वी शुड डू थिंक बिगर। ये एएलएम एलएम इनएक्टिव आईजे हार्ड कॉपी, इससे ऊपर उठ जाओ मैम। ये जो डॉक्टर जेडो ने कहा था ना, गाइडलाइंस, एकेडमिक्स, वर्कशॉप्स, इनके ऊपर सोचो। ये काम ऑफिस वाले हैं, इनका काम है ये। मैं अभी नहीं सर, ये परेशानी बहुत लोगों को हो रही है, इसीलिए मैंने इसको रेज किया। आपका काम ही नहीं है ना। आधे लोग मोबाइल पे टाइप करते हैं, मोबाइल पे एक दो अल्फाबेट इधर उधर हुआ नहीं, वो इनवैलिड दिखा देगा। अगर आपने मोबाइल नंबर से पहले एक स्पेस छोड़ दी, वो इनवैलिड दिखा देता। कंप्यूटर है ना मैडम, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। पर ये काम आपको प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों सोचते हो? कर देगा ऑफिस वाला काम, लड़का, उनका काम है ये, उन्होंने रोज करना होता है। मैम वी नो इफ वी इंटूबेट, डू 10 इंटूबेशंस डेली, है ना, तो फिर हम इंटर्न को भी कहेंगे बेटा तू इंटूबेट कर, मैं खड़ा हूं साथ में। तो ये उनका काम है, रोज उनका काम ही अपडेट करना है। लीव इट टू देम, आप छोड़ दो इसको। आप सिर्फ उनको व्हाट्सएप करो, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, कॉल मी एट दिस टाइम, वो कॉल करेंगे, आपसे पूछते जाएंगे आपका फादर नेम, जब डेट ऑफ बर्थ, वो टाइप करके अपलोड कर देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। सर हमारा दूसरा क्वेश्चन है सर कि जैसा कि मुझे पता चला था कि हम लोगों की बात भी हुई थी कि 5 सिटी ब्रांच हमारे बिहार झारखंड के, इनको हमें वर्कशॉप अलॉट हुआ था सर, जो हमें 31 जून के पहले करना है। डॉक्टर शरद, योर एक तो म्यूट है और काफी इको हो रहा है तुम्हारा, काफी इको हो रहा है। आवाज आ रही है सर? इको हो रहा है, बहुत इको हो रहा है दोनों आवाज। आपने इन्होंने डॉक्टर शरद ने 2 डिवाइसेस से लॉगिन किया हुआ है, इसलिए maybe one device you have to 2 डिवाइस है इसलिए इको हो रहा है सर। सॉरी, अभी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, बहुत अच्छी। सर ऐसा है कि हमारे 5 सिटी ब्रांच को बिहार झारखंड के वर्कशॉप अलॉट हुआ था, तो सर उसके बारे में हमें कैसे प्रोसीड करना है? बिकॉज वी आर ऑलरेडी 2 months डिले बिकॉज ऑफ दिस कोविड, एंड so we want to finish this workshop before 31st May in all the 5 city branch. How to proceed so we can start working on this? Can you guide us, sir? देखिए 5 ISA स्पॉन्सर्ड इवेंट्स, मनोज और मैं थे, तो मनोज और मैंने ये डिस्कस किया था कि बिहार में ISA स्पॉन्सर्ड हमने एक CMEPG असेंबली की पटना के अंदर, है ना, एकेडमिक्स होने चाहिए। और अभी ये बहुत अच्छा आपका प्लेटफॉर्म है कि ऑनलाइन एक्टिविटीज हो रही हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई मेजॉरिटी ऑफ टाइम द स्पीकर्स आर फ्रॉम बिहार इटसेल्फ। आप अपने लोकल टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, बट स्टिल नेशनल लेवल इवेंट्स होने चाहिए। नेशनल लेवल इवेंट्स के लिए यू हैव टू कंसल्ट द डेट्स विद द नेशनल सेक्रेटरी, क्योंकि हम ओवरलैप नहीं चाहते हैं। तो द टाइम यू कैन फिनिश दिस, यू हैव टू फिनिश दिस थिंग्स बाय 31st March 2023 तक करनी है आपको। देयर इज नो मैंडेटरी कि आपको मई तक खत्म करना है, तो यू हैव टू कंप्लीट इट टिल 31st March 2023। प्लस अभी कोविड के चक्कर में फरवरी तक हमने गाइडलाइन एडवाइजरी इशू कर रखी है कि नो फिजिकल गैदरिंग्स। मार्च ऑनवर्ड्स उम्मीद है कि कोविड सेटल होएगा तो वी कैन हैव रिलैक्सेशन, बट आप प्रिपरेशंस डिस्कस करके जो भी सिटी ब्रांच का है, या आप मुझसे पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हैं और डेट्स फ्रीज कर सकते हैं, क्योंकि एज ऑफ नाउ फर्स्ट जो भी डेट्स अवेलेबल होंगी वो 1 मई के बाद ही अवेलेबल होंगी। उससे पहले हर वीकेंड लॉक ही हो चुका है। मतलब और स्टेट ब्रांचेस और सिटी ब्रांचेस ने अपनी डेट्स फिक्स कर ली हैं, ठीक है ना। एक इवेंट डेफिनेटली पटना से एक्टिविटी कुछ प्लान करते हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, पटना से कर सकते हैं, रांची से कर सकते हैं, दरभंगा से कर सकते हैं, गया से कर सकते हैं, कहीं से मर्जी कर सकते हैं। उसको प्लान करिए जमशेदपुर से, और उसकी डेट पहले फिक्स कर लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं और कौन सी डेट को करना चाहते हैं। अगर देखिए 5 एक्टिविटीज हैं, महाराष्ट्र को भी मैंने ये सलाह दी थी कि इसको स्पेस करिए
हर मंथ कोई ना कोई एक्टिविटी हो, रादर देन डूइंग 5 एक्टिविटीज टुगेदर, डू इट सब्सिक्वेंटली। मई में करो, जून में करो, जुलाई में करो, अगस्त में करो, ऐसे करके करते रहो, ताकि एवरी मंथ देयर अकर्स वन और द अदर एक्टिविटी। ठीक है डॉक्टर थैंक यू सर? वेरी मच सर। तो आप अपनी जो प्लान प्लान करके हाँ और शरद, उसको हम लोग discuss को कर लीजिए। प्लान करके तब सर को बताना होगा। एग्जैक्टली सर, वी विल डिस्कस एंड वी विल लेट यू नो। एनी अदर नवीन क्वेश्चन सर, मेंबर्स? नवीन सर, जी डॉक्टर एक रिक्वेस्ट था सर, आप वेरी वेरी थैंकफुल टू यू एंड डॉक्टर बाजवा, आवर एसोसिएट chief editor of IJ, and Dr. Mehdi Ratta sir, and Venkat Giri sir, and Dr. Sekat Sen for publishing the inaugural issue of the IJ Eastern and Northeastern Journal. So thank you very much for your effort and your help for publishing our journal. Thank you very much sir. First, second sir हमारा है कि आप अभी जैसे कि बताए कि इस साल प्लेटिनम जुबली है, तो हम लोग मोड एकेडमिक एक्टिविटी मोड जो है सो जितना प्लेटफॉर्म हम लोग का है एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये जो है हम लोग का पीजी लोग, खासकर पटना में काफी सीट्स है पीजी के, तो आप आए थे एज ए चीफ गेस्ट पीजी असेंबली में, तो 2 साल से 3 साल से फिर हुआ नहीं सर। उसके बाद तो सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि पीजी असेंबली पटना में फिर से होना चाहिए। तो सर इस बार क्या कल वेस्ट बंगाल के अलावा हम लोग को मिल सकता है सर, अगर हम लोग एप्लीकेशन भेजे तो? डॉक्टर मनोज, देखो वेस्ट बंगाल से भी रिक्वेस्ट आ चुकी है, उड़ीसा से भी रिक्वेस्ट आ चुकी है, और तीसरी स्टेट आप कर रहे हो, तो आपको तो इतनी सीएमई अलॉटेड है, उन 2 सीएमई को मर्ज कर लो, क्या दिक्कत है? एक जो पटना में सीएमई करनी है आपने, उसको पटना की सीएमई को पीजी असेंबली में कन्वर्ट कर लो। ऐसा है कि डॉक्टर शरद और डॉक्टर मनोज, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लोग पीजी असेंबली सॉरी सीएमई अलॉट करवा लेते हैं, होती नहीं है, क्योंकि लोकल मेंबर्स को बहुत एफर्ट करना पड़ता है कोई भी एक्टिविटी अरेंज करने के लिए। मैं अगर हमारी काउंसिल के अंदर 20 अलाउड है ना, तो मैं 40 सैंक्शन करता हूँ कि 20 तो हो जाए। मेंबर्स ब्रांच ऑफिस ब्यूरोस अलॉट करवा लेते हैं। अब आपको अलॉट हुए नवंबर से जनवरी आ गया, 3 महीने हो गए हैं, अभी तक हमारी एक भी सीएमई की डेट फिक्स नहीं हुई है, 5 की तो छोड़ दीजिए। तो ये जो पीजी असेंबली है, देखो मैं डॉक्टर मनोज, आपको मालूम है कि मैं पढ़ाई लिखाई के काम के लिए कभी मना ही नहीं करता, और नेशनल गवर्निंग काउंसिल भी मना नहीं करती। पहले अपना ये 5 वाला तो कंज्यूम कर लो, फिर अगर फिर भी रह जाए तो पटना में अगर आप पीजी असेंबली करना चाहते हो तो सीएमई की जगह उसको पीजी असेंबली कर लो। सीएमई करोगे नहीं, क्या आपको लगता है कि आपकी लोकल टीम सीएमई प्लस पीजी असेंबली दोनों चीज करना चाहती है एक साल में? सर हाँ, एक जगह एक ही कर रहे हैं। नहीं सर, हम लोग का पीजी असेंबली कर लेंगे, उसी में वर्कशॉप कम पीजी असेंबली, तो पीजी लोग हाँ एक ही करेंगे सर, लेकिन पीजी असेंबली कर लेंगे वर्कशॉप की जगह, तो ये ज्यादा अच्छा। ऐसा है, देखो आप उसको जो है ना, एक आपका काम है पीजी एकेडमिक एक्टिविटी करना, एक दिन की करनी है, 2 दिन की करनी है, अपनी पटना ब्रांच से प्रपोजल बनाओ, फाइनल करो प्रोग्राम, तब करना चाहते हो, ठीक है ना? उसके बाद ही तो कुछ फैसला होगा ना। सैंक्शन तो 10 करवा लो। ठीक है सर, हम लोग का टीम मैं तो प्रैक्टिकल चीज के ऊपर बिलीव करता हूँ। सर हम लोग का पटना ब्रांच का टीम स्ट्रांग है, और हम लोग करना चाहते हैं सर, हम लोग प्रपोजल भेजते हैं सिटी ब्रांच से, स्टेट लेवल से फाइनल किया जाए मनोज कि कौन क्या करेगा, और वैसे प्रपोजल भेज दो। ठीक है डॉक्टर मनोज, आपकी पॉइंट वेल टेकन सर, थैंक यू। We will move on. We will discuss. We have to discuss so many things. There is one query from our very senior member, sir. Salo, please get my attention, please. Important question I'm going to discuss for all our members, sir. Dr. Naveen Malhotra, sir. This is a special. This was also a request as well as complaint. Also, I will not say complaint, but regarding the CME lectures to Bihar and Jharkhand, sir, during the national conference. Sir, as you know, so many members are going, but nowadays the Bihar and Jharkhand members want to present in the ISA national conference as a CME lecture or guest lecture, as a faculty.
So, sir, it has come to my notice. Am I audible, sir? You are loud and clear. Loud and clear. मैं पानी पी रहा था. Okay, sir. So it has come to my notice by very senior members of Bihar and Jharkhand. So that the senior members, even my recommendation, my information, my personal discussion, they are not getting the CME lectures, sir. So this is a personal request from as a secretary of Bihar and Jharkhand to national secretary. Sir, please look into this matter, because academic activity, we want that our members should get CME lectures at the national level. Then they will, because every state should have some quota. If at least कि बिहार को 10 मिले, ऐसा ना हो कि सब, सर, what you know sir, what I'm saying, कि हमारे lectures बहुत कम मिलते हैं हम लोगों को, सर. तो ये हमारा बहुत genuine demand हमारे members से आता है, मेरे पास आता था कि सर, Dr. Sharad, please talk to Naveen Malhotra, sir, because he is the person who is looking after every branch, and he is doing, definitely he will do something. So this is genuine request from the Bihar and Jharkhand members, as well as Dr. Sharad Kumar as secretary, sir. Dr. Sharad, मैं इसको थोड़ा क्विकली कहूंगा. देखिए, सीएमई की एलोकेशन, वैसे जो साइंटिफिक प्रोग्राम सारा होता है वो चेयरमैन आईएसए एकेडमिक कमेटी देखता है, बट स्टिल आई विल रिप्लाई ऑन हिज और हर बिहाफ. और बिकॉज मैं भी उस एकेडमिक कमेटी का मेंबर हूँ, और एज अ सेक्रेटरी मैं तो कस्टोडियन हूँ सोसाइटी का, तो मुझे तो सबका आंसर देना है ना. वो आंसर देने में ये है कि सीएमई का लेक्चर पर स्टेट एक से फालतू यूजुअली मिलता नहीं है. ठीक है, पर स्टेट एक लेक्चर से फालतू नहीं होता. एक आधी स्टेट ऐसी होती है जिसको 2 मिलते हैं. नंबर 1. आपको क्या लगता है हरियाणा से कितने लेक्चर्स हुए होंगे कॉन्फ्रेंस के अंदर? मेरी स्टेट है ना, होम स्टेट. लेक्चर्स मेरे को मिला के 4, 3 वो मेरे को एज ऑनररी सेक्रेटरी ओरेशन देनी थी, तो उन्होंने मुझे बुला लिया. ठीक है, देखो मान के चलना हमारी 27 स्टेट्स हैं, 10 लेक्चर 270 लेक्चर हो जाते हैं पर स्टेट अगर दें तो. आपने 7 लोगों के नाम भेजे थे, 7 के 7 में फैकल्टी एडजस्टमेंट करवा दी थी, चाहे देर से चाहे सवेर से, चाहे वो चेयरपर्सन थे चाहे वो लेक्चर्स थे. ठीक है ना. डेफिनेटली ये पॉइंट विल बी टेकन केयर. मैं डीमोटिवेट नहीं करूंगा कि गुड स्पीकर्स शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी, इंक्लूडिंग सीनियर्स एज वेल एज यंगर्स. ओके सर, थैंक यू. नंबर में कि 10 होंगे, 15 होंगे, 5 होंगे, वो जब वहां एक ये रहता है, ऐसा नहीं है कि भी बिहार को नहीं देना या हरियाणा को नहीं देना, ऐसा नहीं होता. वहां जब डिस्कशन होती है इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी होती है. प्लस आप अभी पूरा प्रोग्राम उठा के देख रहे हैं ना, जो जिन लोगों के आपने रिकमेंडेशन भेजी थी, पहले तो वो बोलो, जो 7 नाम आपने भेजे थे उनका फैकल्टी पोजीशन इनवाइट हुई थी, यस और नो? बोलो. हुई थी सर, हुई थी सर. हुई थी ना. आपने 7 नाम भेजे थे मेरे को, उन 7 को फैकल्टी इनवाइट मिला था. दूसरा, वैसे मैं बता देता हूँ, जिन लोगों के आपके नाम नहीं भेजे थे ना, कुछ लोग बाय देयर ओन मेरिट फ्रॉम बिहार एंड झारखंड वर इन फैकल्टी. जिन ऐसा नहीं होता कि भाई सेक्रेटरी रिकमेंडेशन भेजेगा तो ही, भाई मैं हरियाणा का सेक्रेटरी हूँ तो मेरी रिकमेंडेशन के बिना कोई नेशनल लेवल पर प्रेजेंट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है. क्योंकि कुछ लोगों का अपना भी स्टेचर या स्टैंडिंग कह सकते हो वो होती है, जिसको चेयरमैन एकेडमिक कमेटी या एकेडमिक कमेटी के मेंबर्स उनको ले लेते हैं. बट डेफिनेटली योर पॉइंट इज वेल टेकन. आई एम वेरी हैप्पी. मेरे को ना अंदर से खुशी हो रही है कि एकेडमिक्स की बात हम इतनी कर रहे हैं. ये हैट्स ऑफ टू लास्ट 1.5 years ऑफ एक्टिविटी, कि हम पढ़ाई लिखाई की बात तो कर रहे हैं ना. तो दिस इज गुड कि वी आर टॉकिंग अबाउट मोर नंबर ऑफ CMEs, बट यस, इट विल बी टेकन केयर that due representation is given for seniors and juniors from all over the country, including Bihar and Jharkhand. Thank you very much, sir. Thank you. Any other question, members? Naveen, sir, please raise your hand. इन्होंने डॉक्टर नीरज कुमार ने, डॉक्टर श्री विद्या ने, डॉक्टर निशांत साय ने हाथ उठा रखे हैं. पहले प्लीज इनको कर लेते हैं, फिर मनोज के पास आते हैं. यस, निशांत, डॉक्टर श्री विद्या, डॉक्टर नीरज. हेलो, Good evening, sir. Yes, please. Yes, Nishant.
Yes, sir. It is very nice to know that ISA has collaboration with the WFSA and RCOA also. Sir, do we have any MOU or understanding, or is it possible that we can go for some faculty exchange programs or have some memorandum of understanding with these institutes in the long run or even the short run for benefit of the young faculty or even the older faculty members? Is it possible? Nishant, WFSA, you know, is a federation for different societies. So their different societies are working, but definitely RCO has got this exchange program, and they have kept in hold since last 2 years. I met Dr. Ravi Mahajan, the president of RCOA, personally in January 2020 in Sri Lanka during the Sri Lanka Congress, and discussed with this public awareness faculty exchange program at all levels. And there was a proactive thing also going on, but because of COVID, everything is virtual as of now. But the doors are not closed. Online right now, they are sending proposals that they want to conduct their own programs, maybe airway, ops, under the banner of RCOA, which can be relayed or transmitted in India. So they are yet in initial stages, but definitely I agree to your proposal that as soon as possible, for these traveling restrictions are over, we can go for a faculty exchange program between different associations, and RCOA looks the best possibility, because WFSA is not a country specific association. It is a confederation of different societies. So their mentorship academy is open, fellowship is open. There are different programs, the opportunities in different countries, they are open for one for all. So as such, there is no specific MOU. WFSA fellowships can be conducted in India and in other countries also, and they are open for everyone, all the member societies. But definitely exchange programs can be done for RCO. I'll call it up. Thank you, sir. Thank you, sir. Dr. Srividya, please. Wish you good health, Nishant. Thank you, sir. Thank you so much. And Dr. Srividya, please ask your question. Dr. Srividya. Yeah, good evening, Dr. Naveen. I Good evening, must madam. really compliment you on a very wonderful presentation regarding the ISA, and I'm sure many of us really who have been a very active participants in ISA but do not know what depth ISA has been taken to in the last few years. And it is excellent to know that we are encouraging our anesthesiologists to achieve not only academic excellence, however, to also grow in all fields as human beings. And I just wanted to put in just a small question here, that obviously we do invite in our academic sessions, in our conferences, the very renowned speakers. Of course, they would not ever need any evaluation. But when we invite some youngsters and some new people into the faculty positions, do we have a methodology of looking at what their performance was and what contributions they made towards the lectures that they were allotted to? Just a thought, because I was chairing a few sessions in the last ISACON, and I went across certain presentations. People didn't seem to really not topics of their choice, and also probably did not do enough justice. In fact, some people did not even feel like making slides, and so that really offended me. I mean, I really felt that it was an insult to an academic organization like the ISA. So do we take those into considerations when we choose our speakers for our conferences? Ma'am, as a matter of fact, each session is internally audited. I should not disclose this, but each session is internally audited. There are 2 observers in each session who take care of these things. Because this was an online thing, so you must be talking about some online halls, because there were 4 physical halls and rest were online halls. So this could have
skipped. Because otherwise in all, and this is a confidential thing which I am sharing with you, there are 2 observers who are monitoring each hall and giving their confidential report. So monitoring is there. As far as selection of faculty is there, definitely selection of faculty is there on the basis of interest and inputs. Like suppose now today, Dr. Manoj or Sharad recommend somebody. They have done with their best possible interest to motivate a particular person. Now it is up to that particular person to realize that he or she is speaking at a national platform and put it the best foot and cherish it. I confess for this particular lecture, it has taken my around, I am the National Secretary breathing in these things day in and day out. I can speak verbatim, but it has taken 18-19 hours. I have done 4-5 shifts of 3-4 hours each. So, because I wanted to interact, मुझे अब मैं देखो इसमें इस वक्त 40 लोग बैठे हुए हैं और ये पर YouTube पे जा रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। शरद और जब मैंने इसको कंसीव किया कि I look my this presentation कि मेरे इस लेक्चर से बिहार झारखंड के अंदर ISA की एक्टिविटीज कितनी बढ़ सकती हैं, how much I can rejuvenate Bihar and Jharkhand ISA activities. So I am happy, but I'll request you to give me a personal feedback ताकि हम आगे से we don't invite such speakers. So I request you, my personal number is 9812091051 और अगर आप ईमेल भी करेंगे तो I'll definitely look into the recordings. क्योंकि recordings तो available हैं online कि why such a thing has happened. Because people otherwise say कि हमें we want youngsters अगर ऐसी गलती करते हैं ना तो that is not acceptable. Because this is their first or second chance, they should prove themselves. So madam, I request you to please give me a personal feedback about that particular session which you were involved in. Yeah, surely, definitely. Thank you so much. I just thought I'd bring it to your notice. Definitely, ma'am. I'm happy that you have brought it in a very nice manner. Don't without disclosing the names and the session. Please discuss with me personally, or if you can share me your number, I'll talk to you tomorrow. Please tell me, madam, your number. 77 63 80 77 52. Thank you, madam. I'll talk to you tomorrow. Yeah, thank you. And Dr. Bhadani, please ask your question. Dr. Ms. Bhadani, sir, please ask your question. Good evening, sir. Sir, you are muted, sir. Dr. Bhadani, please unmute yourself. Now I have unmuted myself. Good evening, everybody. Good evening, Dr. Malhotra. I have some addition and one suggestion. Actually, about 2 years ago, Care India organized 2 very good workshops in collaboration with WFSA, Safe OR and Safe Obstetric Anesthesia, and they came with international faculties, 4 or 5 in number. They just used our SPC names Patna. I just want to ask Dr. Naveen Malhotra, and they have given very good written material also in the form of books and guidelines. So can we utilize those resources from WSA for our city branches to organize different kinds of workshops? This is one. Second, I just wanted to inform that last week only the Department of Anesthesia AIIMS Patna was involved in teaching ventilatory strategy and oxygen therapy to the about 300 doctors and nursing staffs of Bihar. And third is that our PG seats has been increased from 10 to 20 at AIIMS Patna. This is 3 things I wanted to convey. Thank you. Sir, artist, congratulations on the increase of seats, and really happy to note that ventilatory strategies are being taught to the nurses and paramedics because they can be of great help, especially during this COVID pandemic. And I just want to highlight here also that we launched our ISA online mechanical ventilation module on 1st July 2020.
around 1.5 years ago. And that was an online mechanical ventilatory course, which was conducted across the country online for as a refresher course to the anesthesiologists who were working in civil hospitals, and as an orientation course for the other specialty doctors like pediatricians, general medicine, respiratory medicine, and obstetrician and gynecologist. And definitely, sir, that Care India and WFSA workshop, and I'm aware of that, they were held directly by WFSA as a part of their Safe Motherhood program and Safe OR and Safe Ops. You can use those resource materials. Any good academic material coming from any platform is, you can utilize that, sir. You yourself are from a premier institute, sir. So if you adopt that, modify that, or develop that, it's up to you. We want methodology, resources, how approach them, your high society guide and the persons to whom to contact or whom to, that is the basic thing needed. Because that requires a collaboration. Sir, those activities were conducted in Bihar and Jharkhand, not involving ISA. They were done directly by WFSA, sir. No, I know that was not involved in ISA, Yes, but just I am asking because there must be some fund and the faculty in their panel or whatever may be. So that way, because that I thought that's a very good thing also. And the whole, it is all programmed. Programmed means it's all rehearsed, it's all time bound. The method by which they did it, it was really I also learned a lot of things, how to keep time. One person was going with the bell and reminding 5 minutes before, then 3 minutes before, something very simple things. But so can we use the resources? What are the channels to go ahead? That is the idea. So sir, if you can get, we can go ahead with sir, that. I'm not aware of this thing, how it was done in Bihar. It was a direct project by WFSA. I will also try to search from Care India. If I get it, I will also get back to you. Thank you. Right, sir. Because I, as a national secretary, I was not involved in that particular project, sir. I have got no idea about that, sir. But you know that yes, it was there. Yeah, as a secretary, I'm aware of everything what is happening across the country. But if it would have been under the banner of ISA president or secretary would have also been invited, sir. So you know that they were not a part of this particular program, and so it was done directly by WFSA along with Care India, sir. So we don't mind. It was done directly. Sir, see, it was done directly. ISA is very clear, sir. If some good academic or clinical activities is done, we don't mind it, sir. At the end of the day, it is for the benefit of the patients. But if we are enriched academically and clinically, ultimately benefit is going to be that of patient. So we don't mind that, sir. Okay, sir. Thank you. Right, sir. Thank you, Dr. Badani. Thank you, sir. Sir, I have 1 or 2 queries. Can I ask, sir? Neeraj को एक मिनट सुन लेते हैं. Neeraj has been waiting since long. Neeraj, हाँ, कहाँ पे हो? बताओ. A very good evening, sir. First of all, sir, your presentation was very fine and it was very simple and lucid. We have understand all those important aspects of various committees and formation that what under your esteemed guidance it has been formed. Sir, I just want to ask few questions from your side that, sir, whether ISA, under the banner of ISA, can we plan some multi-centric studies, sir? Because few of the Indian Society of Critical Care Medicine, they have already started doing such multi-centric studies in which entire globally the study is running on, and so finally it has been published under the banner of Indian Journal of Critical Care Medicine. So my first question is like that: ki suppose if we send as a principal investigator to you some proposal, and after that with your esteemed juries and your members, whether that study is feasible to be conducted and whether these multicentric should be done under ISA banner or not. So this is my first question, sir. And my second question is, sir, in Indian Resuscitation Council, suppose if a member who has already done a TOTs, whether he can conduct that CCLS or POLS or COLA program on his own in that city branch or not. So this is my second question. And my third smaller question is, sir, how can we be a part of a ISA faculty pool? Okay, nice questions. And all are related to academics. I'm happy. Multicentric trials have been long been
back approved by ISA. The only requirement is that local ethical clearance is the responsibility of the individual. If you submit a proposal that I want to conduct a multi-centric trial, it will be sent to all the branches. Those who want to participate, they will have to get it approved in their institutes. That is the responsibility of the local person. Usually institutes don't charge because these are not sponsored projects. If we have got some sponsorship, charge is around 50,000 per institute. But ours is, we won't be going for funding. So we can get it done. Clearance will be from our institutes free of cost. But that is the responsibility. I have received 6-7 proposals so far. But nothing has moved from one PI. See, you send a proposal that I want to conduct this thing. You also contact and I also contact 7-8 institutes. But until unless they get an ethical clearance from their own institute, you cannot start the project. ISA cannot approach a medical, I cannot approach AIIMS Patna for ethical clearance. You have to approach AIIMS Patna Ethical Clearance Board for the clearance, right? IEC को आप ही ने approach करना है. So institution ethical clearance आपको लेनी है. But multicentric trials and funding is also there. 1. Okay. Okay. 2. TOT. For conducting a compression only life support program, you don't need any certification. Being anesthesiologist itself, you can conduct calls program across the state, across the city branch. For conducting BCLS program and CCLS program, there is a standard protocol that BCLS program has to be of this particular duration. These particular mannequins should be there. This many number of faculty should be there. And for CCLS, it is a 1.5 day program. These number of mannequins and faculty should be there. If you, those details are available on IRC website also. Otherwise, I can send it to you also. Okay. I have personally conducted, I am in an institute, I have conducted BCLS programs for other specialties. Like IMA usually requests, they require it for their accreditations, right? So they send a request, कि आप करवा दीजिए. So I've got a team, I've got a set of mannequins, defibrillators and other drugs and equipments, AEDs. They go and conduct the program. Everything is online. There is a fixed fees. The course material comes in advance and it is posted to the members directly. You enter the name of the certificate, you enter whatever the, everything is, the certificate is generated online. So all these things are very, very channelized. You just need a spirit to do it. I can understand with COVID, physical gatherings are not possible. So it is again taken a back seat. Problem क्या हो रही है कि हर 6 महीने में restrictions आ जाती हैं. जुलाई में restrictions relax हुई तो जनवरी में फिर आ गई. Physical gatherings are not allowed. So, but these are all very, very channelized things. You can conduct it. If you have got your faculty 5 or 6 which you are required, they all should have their training of trainer certificate with them, and then you can do it. Absolutely no issues. Okay. And third, faculty pool. There is a tab on ISA website where you can type in and become a member of ISA faculty pool. And you may be already a member. You have to type your areas of interest. My areas of interest are these things. So see, faculty pool does not means that you have to deliver a lecture at the national level. You can deliver at the level of CME also. You can deliver at level of workshop also, as something, be a part of some workshop also, or a PG assembly also. And then you subsequently go. Everybody has gone through same phase. Presenting a paper at the college level, then state level, then national level, then chairing a session, then taking a lecture, and then a CME lecture, and then an oration. So these things, they automatically, what I can tell you is, the secret is, as I told to Madam Shri Vidya, your each lecture will be analyzed. If you are good, you will automatically receive invitation for the next year. सूरज को रोज निकलने से कौन रोक सकता है? That is true. Yes, sir. तो हर साल लेक्चर लेने से कौन रोक सकता है? बच्चे हो तो आप बोलोगे. You will be forced to. They will be forced to invite you. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. So this is connected with the same question Neeraj asked regarding the TOT and so things. So Jamshedpur City branch is doing very commendable job. They have already done 2 or 3 programs in the last November and December, but because of this COVID,
this month we are not able to do that because of the physical issue. So I have two query regarding this, sir. One is that few branches are asking for the mannequin because many small branches, they don't have the mannequin. Although Jamshedpur we have one, we get. So is there any we can get any support from the national to buy or some subsidized rate? Or although I know there are the coal team are looking after, but we can buy, or you can sponsor, or you can donate 1 or 2 mannequin to each city, each state. So it will help us in moving fast. One. Next is, hello. The other is, sir, we are coming with the newsletter. The Bihar and Jharkhand is going to publish its first newsletter in next 1 or 2 months. So can we get something for this also? Because I know the money is always involved. We are going to publish this. We have already planned, and we will move forward in this direction. So what support we can expect from the national body, sir, regarding these two, sir? CPR mannequin, Dr. Sharad, scheme is already going on since last 4 years of 1+1. We have a tie-up with Lardal for the BLS, BCLS mannequin, which costs somewhere around, now the cost with courier is around 9,500 rupees. If the branch buys one, the ISA gives one. And almost 125 branches have utilized this scheme. Then subsequently, we have revised it. Those branches which have got a membership more than 100, they can opt for a second one also. So it is 1+1. You buy one, we give one. Matching grant. So suppose Jamshedpur wants, suppose it has not taken any mannequin so far, and its membership strength on ISA record is more than 100, they can buy 2 and get 2 free. You spend around 18,000, we pay 18,000. You spend 9,500, we pay 9,500. So this scheme is there across the country and still going on. So anybody can avail this benefit, whether it is Gaya, Patna, Jharkhand, anything. As far as newsletter is coming, I will say, don't go for a hard copy, go for an e-newsletter. If you want to sustain, ISA was publishing hard copy of newsletter, but it was discontinued based on the experience. So my suggestion, I am also publishing only e-newsletter. So print and e-newsletter. As far as e-newsletter cost is concerned, you will say, sir, I don't need any support from national because cost is peanuts. So initially think of a quarterly e-newsletter and e-newsletter. फिर नहीं तो यही कंप्लेंट आएगी मेरे पास आईजे की तरह कॉपी पहुंची नहीं. वैसे मैं आपके लिए बता देता हूं, मैंने बहुत लोगों से इंटरव्यू किया, मैंने कहा आपने वो आर्टिकल पढ़ा? हार्ड कॉपी जिनके पास पहुंचती भी है ना, वो भी एनवेलप से ही नहीं खुलता कई बार तो, और एनवेलप खुल जाता है तो एक आर्टिकल पढ़ के छोड़ देते हैं. ये फैक्ट है. तो ई न्यूज़लेटर की अभी कोई सपोर्ट नहीं है, और अगर आप ई न्यूज़लेटर निकालेंगे तो उसकी सपोर्ट आप मांगेंगे भी नहीं. Right, sir. Got your point. Thank you, sir. Dr. Koshi. Dr. Kosi Varghese, sir. Good evening, sir. Good evening, everybody. This is again a related question, Dr. Malhotra. This is regarding simulation software. Does ISA have, or can we plan to have simulation software which other hospitals, or especially with teaching and all, can rent or use, pay some user fees and use, so that it helps us an aid in teaching? Are we thinking on those lines? Sir, as you must be aware that these softwares are costly, and simulation labs takes around 1 CR to 4 CR to set in. The expected budget is between 1 CR to 4 CR. So investing such a big amount, where to put it, where to put this simulation lab, and where to have some space. So in these proposed ISA skill centers, we will be including those institutes which have got simulation lab in situ.
there are many institutes which have got simulation lab in situ, and some have got complete, including anesthesia also. So we will be tying up with such centers. What cost they will offer to ISA members? What subsidized cost? So suppose somebody wants to do a simulation course in fiber optic bronchoscopy, and it is done in A institute. So the member says, I want to do this much course. The institute will tell, we will conduct this course in 5 days, 7 days, 15 days, and this will be our basic cost. So ISA will act as a bridge between the institute and the member, and subsequently try to find a sponsor to partly subsidize such skill center training courses. But having our own simulation lab is slightly at present logistically not being worked upon. We are planning where these simulation labs are already established to send our members there and support them. Thank you, sir, for a start. That is really a good idea to go ahead with. And later, if it becomes feasible, then we can work with ISA. Otherwise, if you do this first mile connection also, many of the students and faculty would be really helped, because these labs are really costly and the software is also very costly. Yes. Thank you, sir, for this initiative and that you're thinking about it. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Dr. Kosi. So as I see there is no hand raised, I request it's already 9. सर एक जस्ट एक क्वेश्चन है सर से. सर हम लोग का जनरल बॉडी मीटिंग में दो यंग एनेस्थेसियोलॉजिस्ट अवार्ड शुरू हुआ है, सेट काइंडली अनाउंस सर. अमीन सर, यंग एनेस्थेसियोलॉजिस्ट अवार्ड, हाँ वो तो चल रहा है हमारा. डॉक्टर बीबी मिश्रा मेमोरियल यंग एनेस्थेसियोलॉजिस्ट अवार्ड और डॉक्टर एमटी भाटी यंग पेन फिजिशियन अवार्ड, उसकी बात कर रहे हैं डॉक्टर मनोज. Dr. Manoj, we lost you. नहीं ऐसा मत बोलो, we lost you. We lost your connection. तो नहीं एक्चुअली क्या है कि अभी जो है ब्रांच लेवल के ऊपर जो मेंबर्स वर्क कर रहे हैं ना, उनको मोटिवेट करने के लिए भी अवार्ड्स शुरू किया है. कि अभी क्या है कि हम ब्रांच अवार्ड्स देते हैं. कुछ मेंबर्स ऐसे हैं which are who are silently working, who don't need any recognition. So but we want that they should keep on working in good interest for ISA. So they are young diligent award, right? Young diligent anesthesiologists who are working for ISA. So unka rules and frameworks are being followed and they will be shared soon with all the members. And definitely ISA believes in acknowledging, appreciating and awarding. Acknowledge, appreciate and award. और आपसे सर रिक्वेस्ट रहेगा कि हम लोग पीजी असेंबली पटना ब्रांच में अगर अरे डॉक्टर मनोज सीएमए कर लो प्लीज. आप आपकी जीबीएम का आप ही का प्रपोजल आपने अपनी ईमेल से भेजा हुआ है कि ईस्ट जोन की पीजी असेंबली वेस्ट बंगाल को अलॉट होती है. डॉक्टर मनोज कुमार आपकी पर्सनल ईमेल से आई हुई है. आपको मैं एक रास्ता बताता हूँ डॉक्टर मनोज. रास्ता ये है कि आप कहिए कि वो पीजी असेंबली फाइनेंशियल ईयर 21-2022 की थी और फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बिहार को दे दी जाए. समझा? ठीक सर, ठीक है. आप सारा काम मेरे से तरीके से करवाओ ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो फॉलो होंगी ना. आपने अपनी मनोज बिहार शरीफ @yahoo.com से मेल भेजी हुई है कि पीजी असेंबली ईस्ट जोन की वेस्ट बंगाल को अलॉट करो. आपकी चीजों को मैं कैसे कर दूं? नहीं सर राइट. आप अगले साल फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दीजिए मनोज सर. फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दीजिए सर. हम वो नहीं कर रहे सर. नहीं अपने जीबीएम से सुनो पिछले साल वाली तो हुई नहीं अभी तक. नहीं हुई सर. तो वो 21-22 में डाल देंगे. 22-23 की ओडिशा और बिहार में से 2 स्टेट्स को मिलनी है. तो सर आप मांगो दे देंगे. कुछ करो तो सही. मांगते ही नहीं. अरे भैया 5 सीएमई पहले अलॉटेड है, पहले उसका फंड तो कंज्यूम कर लो सर. उसके लिए नहीं हम सर कह रहे थे. अरे मैं वही तो कह रहा हूँ.
हरे सर, राम, पहले वो जो 5 अलॉटेड हैं उनको तो कंज्यूम करो, पीजी असेंबली भी कर लेना। सर हम दूसरा चीज बोल रहे हैं सर कि हम लोग का जो भी 5 अलॉटेड वर्कशॉप है ऑब्लिक पीजी असेंबली, तो सर उसमें आपको हम लोग कॉर्डियली इन्वाइटेड करते हैं। अरे नहीं भी करोगे तो मेरी अपनी सीएमई है, मुझे तो आना ही है, मुझे क्या इनवाइट करते। अरे मनोज, मैं प्रिंसिपल होस्ट हूँ सर, मैं गेस्ट नहीं हूँ। सर नहीं आना है, फिर भी टाइम ब्लॉक करके सर रखिएगा। सर मनोज, जी सर, जी सर, आईएसए सेक्रेटरी चीफ होस्ट होता है, चीफ गेस्ट नहीं होता, चीफ होस्ट हूँ मैं। यस सर, आप मुझे गेस्ट वही मत सर, बनाओ। आप नहीं बना करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज। Don't worry. I repeat, any program of academic clinics will not be turned down. Request to do it. That's it. Over to you, Sharad. शरद, देखिए सर को डिले भी हो रहा है, बहुत देर हो गया। शरद, डॉक्टर शरद, अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर शरद, अनम्यूट कीजिए। शरद, you are mute. लगता है उनका कनेक्शन छूट गया। आई रिक्वेस्ट टू डॉक्टर शरद, डॉक्टर, हेलो डॉक्टर शरद, म्यूट है। Am I audible? Yeah. Now Hello, you am are I audible. Yes, you are audible. Okay. Now you Thank are you. audible. Thank you very much, sir. So as I see, there is no hand raised. So I hope all our members are very much satisfied with their question and the answer which we got from our esteemed speaker and National Secretary, Dr. Naveen Malhotra, sir. So we move forward. I would like to invite Dr. Neelam Sinha, madam, to please start the proceedings of the Thanksgiving. Okay, please, Neelam Malhotra, madam. Madam is also muted. Madam, unmute yourself. Dr. Neelam is muted. Thank you, Dr. Naveen Malhotra, sir, हमारे secretary. So it was a very enlightening talk by you, sir, and we are really benefited. There were so many things which we didn't know, and truly speaking, since so many years, we were unaware of such things. Thank you very much, sir. We have few special invitees in our forum. I would like them to speak a few words, and then we'll conclude the program. Dr. Mahesh Kumar, our Vice President, is he here? Dr. Mahesh Kumar. Dr. Mahesh just left. He got a call from the ICU, so he messaged me that thank you very. He wanted to convey his message and thank you very much कहना चाहते हैं डॉक्टर नवीन मल्होत्रा सर को, और उनसे फिर मुलाकात होगी सर। उन्होंने कहा है कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, बहुत सारी लर्निंग थी, और इट्स न्यू बिगनिंग फॉर द बिहार एंड झारखंड सर. He is our Vice President. I'll request Dr. Manoj Kumar to say a few words. सबसे पहले तो हमारे चीफ गेस्ट और स्पीकर डॉक्टर नवीन मल्होत्रा सर, हमारे सेक्रेटरी को बहुत बहुत मुबारक और धन्यवाद कि वो हम लोग को इनलाइट किए। पूरा जो एकेडमिक जो हमारे जो आईएसए के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे करें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये मैसेज पूरा बिहार झारखंड के ईच एंड एवरी पर्सन के पास जाएगा कि क्या प्रोग्राम चल रहा है, और पीजी के पास, और हम लोग काम करेंगे और बहुत बेनिफिशियल रहा सर। थैंक यू वेरी मच। और रिक्वेस्ट करेंगे सर इसी तरह बीच में आते रहिए सर, हम लोग के बीच में। सर के लिए एक जोरदार ताली बजो जाए। Thank you, Dr. Manoj. Now I'll request our past president, Dr. B.K. Prasad sir, to say a few words. First, I would like to thank Dr. Naveen Malhotra sir, our secretary. Although I am past president, but from all members of the Bihar, all officials of the Bihar branches, जितने आपके branch हैं sir, आपके branch, एनेस्थीसिया सोसाइटी के आपके branch, उन सारे मेंबरों की तरफ से सादर सप्रेम अभिनंदन सर।
दो शब्द मैं और कहना चाहूंगा सर, पिछले 42 वर्ष से आई एम एसोसिएटेड विद दिस एसोसिएशन सिंस 1980, but myself was not knowing these are the activities of ISA. Very sorry sir for myself, and very thankful to you for this information. But I would like to add a few words, sir. The world Bihar or the new Bihar Jharkhand has glorious history in ISA. Even the first meeting which was held on 16th of October 1946, जिस दिन ये पहली बैठक हुई थी कि ISA का एक एसोसिएशन बनेगा, 1946, Bihar has represented with Dr. Molotresser. Bihar has given you so many presidents like Dr. N.K. Misra, Dr. S.P. Singh, Dr. G.K. Sinha, many vice president, Dr. S.K. Burma and Dr. V.K. Gupta, many council members, Dr. G.K. Sinha, Dr. A.K. Gupta, S.S. Oja, V.K. Gupta, Manoj Kumar recently, and so many. Bihar has honored you, the association, with the first MS of Bihar, that is Professor Nasir Ahmad from the Darbhanga Medical College, and Dr. T.N. Jha as a HOD in those period with from Darbhanga Medical College. The first conference was held in Hyderabad, first conference of ISA in 1965, and the 9 state and 26 city branches were formed, out of which Bihar and Patna city was one of them during those days. Sir, we are ready. We have managed so many conferences, state and zonal conferences, even Research Society conference, Pain conference, and so many things. And in this chain, we are ready to have a national conference with your blessings, and our renowned members like Dr. V.K. Gupta, Dr. Manoj Kumar, Dr. Ajay, Dr. Vijender, Dr. Nishant, Dr. Avyuday, Dr. Vadani, Dr. Sarad, Dr. Neelam, Dr. Jadan, Dr. Shri Vidya, Dr. Hari Damodar Singh, Dr. Sukesh, Dr. Mahesh, and so many active members of our branches are ready to take the responsibility of this conference. So this is my sincere request that give us a chance to have a national conference. Since 1967, Bihar is ready to face the second conference. Please, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Namaskar. Thank you so much, sir. Now I'd request our National Vice President, Dr. One minute, yes. Madam, please. Sorry. Yes, sir. Yes, now, sir. Sorry, sir. One thing I would like to add in the name of our National Secretary, Dr. Naveen Malhotra, sir. Sir, there's so many different sections you have added during your period, and that now I think every member, if they are desirous, they can have their own direction and own group for the fulfill of their desire and achievements. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Now I'll request our National Vice President, Dr. Anjali Bhure. She is our special invitee today to speak a few words, ma'am. Thank you, Dr. Neelam. Dr. Singh, President, BJSA, Dr. Naveen Malhotra, sir, Dr. Mahesh Kumar, Dr. Prasad, other office bearers in chairs. Thank you for inviting me to this meeting. Today's topic was pretty interesting and equally important. And I think Dr. Naveen Malhotra was the best choice, as no one else can speak about ISA as Naveen Malhotra, because he breathes ISA. And it was nice to see that the members of Bihar and Jharkhand society were ready with their questions. They all are charged up to work for ISA. And I think, Naveen sir, I must say that in near future, we will find this particular state coming up in forefront as a bright state branch. So congratulations, my best wishes once again to BJSA. And it was nice to see that a different kind of program was arranged on this topic of ISA. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Now I'd request our President, Dr. D.K. Singh, sir, to present a certificate of appreciation to our National Secretary, Naveen Malhotra, sir, for being with us and enlightening us with so many facts of ISA. It's my great honor
to present the certificate to our national hero and our national secretary, Naveen Malhotra sir. Sir, please accept the certificate from BJSA, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Now I'll request Dr. Ajay Kumar, our past secretary BJSA, to give vote of thanks. Thank you, Neelam ma'am. Respected our National Secretary, Dr. Naveen Malhotra sir, our past President, BJSA, Dr. B.K. Prasad sir, and present President, Dr. D.K. Singh sir, our past National GC member, Dr. Manoj Kumar, our State Secretary, Dr. Sharad Bose, and the PSA President, Dr. Vijendra Prasad sir, Nishant, Dr. Hari Damodar sir, Ashok Jadan sir, Sanjay Devna, Gurmukh sir, Rakesh sir, Sukesh Basuki, and all other key dignitaries from BJSA. This was a special seminar or workshop where today we went away from the regular practice of discussing medical topics of medical interest due to which we are connected to each other is ISA. I would make a special mention and thank you to Naveen Malhotra sir for elaborating on the role of ISA, the subset of ISA, their role and the impact it is making. It was great to hear some informative, relevant and forward-looking statement from our National Secretary. Seminar like this going to bind the ISA further and bring higher bonding and ownership among the members, and great work from ISA which will be noticed to entire medical fraternity. I am grateful to the members of BJSA for giving me the opportunity to present the vote of thanks. I take this opportunity to compliment each and everyone who joined the seminar today, and we will take the message to those who could not connect. Thank you, Naveen Malhotra sir, for enlightening us, and thank you all participants for joining the seminar. Thank you and good night to all of you. Ajay, Dr. Ajay, it's pleasure listening to you and having amongst us Dr. Abhuday Kumar and Abhishek Basuki and so many other luminaries. ऐसा लगा कि दोबारा से बिहार में आ गए हैं, and I am reliving many of the visits. So I know I visited Bihar 10-15 times, but आज एक बारी और अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. ऑफिशियली हम लोग मीटिंग क्लोज कर दिए हैं, बट 2 मिनट के लिए अगर सबको वीडियो ऑन करके एक गाना हो जाए सर के लिए, कोई गाना चाहता है तो आई रिक्वेस्ट आवर लता मंगेशकर, श्री विद्या, प्लीज एक गाना हो जाए सर के लिए. ऑफिशियली वी हैव क्लोज द मीटिंग. हमारे बीजेएसए कल्चरल कमिटी नहीं, आई थिंक शी लेफ्ट. नहीं, शी इज देयर. श्री विद्या. Dr. Vidya, she left. I think she left. Dr. Manoj sir गाएंगे सर. हाँ, Dr. Manoj एक गाना हो जाए मनोज भाई. हर बार ISA का गाना हो. ये गाना डेडिकेटेड है नवीन मल्होत्रा सर, नेशनल सेक्रेटरी, आवर नेशनल सेक्रेटरी, एंड अंजलि भूरे मैडम, आवर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ISA नेशनल. खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है. दिल मेरा तोड़ो न मेरी हैसियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है. अंजाम है कि मेरा होना है ये तेरा, इतनी भी हो दूरियां फिलहाल है. ये दूरियां फिलहाल है. ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का
क्या हाल है तुम्हारे बिन हम आईएसएन का क्या हाल है. Thank you very much. Thank you. Now we have Thank you, sir. Trividya madam. Dr. Trividya is with us. एक 2 मिनट का शरद, गाना सर के फंसाने लिए. से पहले बोल तो दिया करो यार. आप हमारी आशा भोसले हैं मैडम. यू आर आवर आशा भोसले. प्लीज सर के लिए गाना हो जाए, सर को डेडिकेट किया जाए. So after that we will close the program. सोचने का भी मौका नहीं देते तुम तो. Yes madam. Yes, we all are waiting for your song. सर के लिए क्या गाया डेडिकेट जाए? करना है. इतना फटक से यार शाम को बोल देते एक बार. Request Dr. Ashok Jadan sir to sing. हाँ प्लीज. यस डेफिनेटली. हाँ yes डॉक्टर जाडन. तब तक आप सोच लीजिए सोच मैडम. रही है तब तक डॉक्टर अशोक जादन सर कुछ he can sing a few lines. नहीं, लता मंगेशकर और आशा भोसले के बीच में मुझे क्यों खींच रहे हो बेकार जबरदस्ती. सर गा लीजिए ना. लता मंगेशकर को गाना याद नहीं आ रहा है सर. लता मंगेशकर अभी गाना रिकॉल कर रही गए हैं. नहीं उसको तब तक आप 2 लाइन गा दीजिए जब तक वो रिकॉल कर रही है. हमारे एस्टेब्लिश सिंगर हैं, उनको सुनना चाहिए. सर किशोर कुमार चलते हैं सर. गाए. सुनाओ श्रीविद्या सुनाओ. सर कुछ ख्याल ही नहीं आ रहा ना. इतना फट से शरद ने फंसाया इतनी जोर से. इसीलिए तो मैं सर को बोली कि तब जब तक तुम याद करोगी सर गा देंगे. मैं फिर क्लोजिंग वाला गाना गा दूंगा तो फिर उनका गाइए ना सर. कुछ शुरू करने वाली थी ना. अब कुछ नहीं क्लोजिंग सॉन्ग गाना पड़ेगा कि चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. तो हंसते रोते जीते ये दिन, मुस्कुराते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. I think salute. Thank you. Actually, everything is undermined and underestimated once. This is from my core of my heart. I think this is Dr. Naveen. I have listened to you so many times, and this was the super. It was very informative for everyone, and this will go a long way for the prosperity and development for the Bihar and Jharkhand branch. That much I can say. Thank you so much. श्री विद्या मैडम. बस निशाद ने फरमाइश की है. नवीन सर है कि नहीं? सर है. कहाँ जाना है? मैं सर मेरे से कोई नवीन पूछता सर है, होता. जब तक डॉक्टर सर घड़ी देख रहे हैं लेकिन है. नहीं सर नवीन सर. नहीं डॉक्टर श्रीविद्या, डॉक्टर अजय, जब भी कभी मेरी याद आए तो थोड़ा सा गर्दन झुका लेना. मैं राइट एट्रियम या लेफ्ट एट्रियम में घूमता फिरता मिल जाऊंगा. अरे वो तो पता है. हाँ जी मैडम प्लीज. और सर वही हाल आपका हो रहा है आपके साथ. निशाद ने फरमाइश की है तो स्टूडेंट की बात नहीं टाल सकते. तो जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ ऐसे. कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ ऐसे, तुम देना साथ मेरा ओ ऐसे. Too good, ma'am. Thank you. That was good. बहुत अच्छा मैम. And this puts more responsibility on me. इतना faith. Definitely. To live up to such faith requires more work. Thank you, ma'am. Thank you so much. तो सर इसके साथ हम लोग प्रोग्राम क्लोज करते हैं. आपके दिल से 2 बात करते हैं. जी हाँ, आपके दिल से 1 मिनट कुछ बोला जाए सर.
मेरे दिल से? यस, आपके दिल से, क्योंकि आप हमेशा दिल की बात करते हैं सर, और आपको हम लोग दिल से पसंद करते हैं सर। बिहार झारखंड इज फैन ऑफ यू सर। मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर धरातल के ऊपर एक्टिविटीज बढ़े, जैसे थोड़ा कोविड कम होता है। कोई मर्जी एक्टिविटी हो, वेदर देयर एकेडमिक, क्लिनिकल, रिसर्च, मल्टीसेंट्रिक ट्रायल, CMEs, वर्कशॉप्स, मेंबरशिप ड्राइव, कल्चरल, रिसर्च, मेथोडोलॉजी वर्कशॉप, कुछ मर्जी हो, वो एक्टिविटीज ग्राउंड लेवल पे दिखनी चाहिए। आप लोगों ने बहुत अचीव किया है लास्ट 1.5 years के अंदर, विच यू हैव राइटली वन अवार्ड्स फॉर दैट आल्सो। पर चूंकि एक सुरमई शाम हो रही है, तो 1-2 लाइनें मैं भी कह देता हूँ। गजब सर। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे, जो जम गए तो कुछ नहीं। तो जमना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। लॉन्ग लिव ISA, जय IACM, जय हिंद। Long live IASA. Thank you very much. Thank you. Good night, everyone. Good night. Good night. Good night. Good night. गुड नाइट। Good night. शरद बॉस, हाँ थोड़ा बोलिए भाई। रुकेंगे हम लोग कुछ लोग रुकेंगे। ईशांत बॉस, अजय बॉस, हमारे हमारे डीके हम अब निकल रहे हैं, हमको 2 जगह जाना है। अरे आपको नहीं निकल, डीके बॉस अभी को तो 2 रुकना जगह है। शादी में जाना है हम। अरे आप ही से तो शादी में जाना है। अरे डीके सर, आप ही से कुछ कमिटमेंट लेना है। अभी रुकिए 5 मिनट का। हाँ 5 मिनट। हेलो हाँ हाँ बोलिए, डीके, हमको शादी में भी जाना है। अरे धनबाद हम लोग को आना है, कब आए? हाँ अब जनवरी के बाद, जनवरी तो हो ही गया, हाँ फरवरी में आइए। तो डेट होली के पहले हम बोले थे, तो होली के पहले एक प्रोग्राम करवा देते हैं। होली तो बहुत दिन है बस, हम फरवरी में कब आए, हम लोग प्रोग्राम बनाए और फरवरी में बना देते। 9 तारीख को हम पटना आ रहे हैं, उस समय हम मिलते हैं, उसके बाद हम कर लेते हैं 28 के पहले। ठीक है ना? तो ठीक है, आप जा सकते हैं। कमिटमेंट 28 तक हम कर लेते हैं। मीटिंग, उसी में एक मीटिंग भी हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे बॉस। एकदम हाँ, थैंक यू सर। मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। शरद डॉक्टर शरद, एक तो मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिए ना यहाँ पे। बीके प्रसाद सर, बीके स्टेट का। हेलो, हाँ बीके सर आज हमारे साथ। हाँ डॉक्टर शरद। हाँ सर, यस सर, हम हैं सर, बोलिए सर। एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिए, हम उसमें CMA भी कुछ कर रहे हैं और बाकी हम लोग मिल के कर देते हैं। नहीं सर, देखिए धनबाद में आप डेट फिक्स कीजिए मनोज से लेके। मीटिंग सर हम लोग ऐसा करते हैं, आप लोग डिस्कस कर लीजिए। हम सब बात करते हैं। मीटिंग, हाँ मीटिंग रिगार्डिंग नेशनल ठीक है। कॉन्फ्रेंस एट हम बता रहे हैं ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम लोग का जो रांची में जो होने वाला है सर। हाँ उसके बारे में कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग एक मीटिंग रखेंगे जो धनबाद में रखना है। हाँ सर, 2 मिनट हम बोलना चाहेंगे सर, 2 मिनट प्लीज, अगर आप लोग सुन सकते हैं। पटना सॉरी, जब रांची जो हमारा स्टेट कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आई एम इन टच विद द सेक्रेटरी रांची सिटी ब्रांच मिस्टर डॉक्टर नसीम अख्तर। डेट आप लोगों को पता चल गया होगा, 8, 9, 10 है, 8, 9, 10 अक्टूबर है स्टेट कॉन्फ्रेंस रांची में। उसके लिए हम लोग बात करेंगे। बात उसी के दौरान, अभी नेक्स्ट मंथ जैसे थोड़ा कोविड का खुलेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे उसी के दौरान रांची भी चले और वहीं पे धनबाद के मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो होना है उसका भी डिस्कशन हो। 5-7 लोग हम लोग चलेंगे, बात करेंगे, क्योंकि अब समय है आगे बढ़ के इस सब चीजों के बारे में डिस्कस कर रेगुलर डिस्कशन होते रहना चाहिए। और उसी दौरान हम लोग धनबाद भी जाएंगे, दिनेश सर के साथ मिलेंगे, वी विल हैव पार्टी। और बीके सर, आपका भी कुछ अनुभव हम लोग लेना चाहेंगे, क्योंकि आपसे जैसे बात हुई थी मेरी कि नेक्स्ट 10-15 डेज में वी विल कमिटी सब बन जाएगी। जितनी भी कमिटी बनी है हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसके बारे में जैसे एक है कि सर कमिटी में एक चेयर होगा, उसके साथ 5 मेंबर होंगे, 5 में से 3 बिहार का होगा, 2 झारखंड का होगा, 5 जो है सर 5 सिटी के होंगे। माने पटना का केवल पटना, रांची, जमशेदपुर नहीं, दरभंगा का भी होना चाहिए। 5 सिटी ब्रांच का अलग अलग होना चाहिए सर। और 2 सही है, बहुत अच्छा प्रपोजल है। एक कोऑर्डिनेटर। अच्छा देखिए शरद,
हाँ शरद, हम निकलेंगे जस्ट, मतलब हम ये करेंगे, हम अभी जस्ट निकल रहे हैं। आप पूरा डिस्कशन कर लीजिए, कल हमको आप बता दीजिएगा, ब्रीफ कर दीजिएगा। जरूर सर, जरूर सर, जरूर। थैंक यू सर। ठीक है गुड ना? नाइट सर। ठीक है, ओके हाँ ओके। सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर। ओके ओके ओके, नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। सब काफी सीनियर नीलम मैडम, इनसे हम बात कर, आशुतोष है, राकेश जी हैं, नितिन है, वैशाल वैभव हैं, डॉक्टर कोशी हैं। तो सर जैसा आपको पता है कि ये मीटिंग 18-19 कमेटी बनेगी, उसके चेयरमैन का हम लोगों से कल दिन भर मैंने सब चेयरमैन से बात करके कंफर्मेशन ले लिया है। उनके साथ 5 मेंबर रहेंगे हर ग्रुप में, 5 में 3 बिहार, 2 झारखंड, इक्वल सबको मिलेगा। उन 5 में से 5 लोग अलग सिटी ब्रांच के होंगे सर, ये मेरा एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि और उन 5 में से एक कोऑर्डिनेटर। शरद बॉस, हम लोग अभी बहुत कम आदमी है, 14 आदमी, तो हम चाहेंगे कि आप कम से कम चेयरमैन का नाम तो अनाउंस कर दीजिए, इसके बाद फाइनली ग्रुप पे डाल दीजिए। ओके, जरूर। चलिए, हमको पे करना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर नवीन थे, इसलिए हम नहीं चाह रहे थे अभी, ये क्योंकि अभी अपना इंटरनल मैटर है। जस्ट 2 मिनट डॉक्टर, सबको हम लेना चाहिए। जस्ट गिव मी 2 मिनट, आई एम अनाउंसिंग ऑल द नेम्स, ठीक है? और किसी को डिसहार्टेंड नहीं होना है, इसमें और भी कमिटियां हम लोग प्रपोज करेंगे आगे चल के, तो एक बार सुन लें हम लोग। सबसे पहला जो नाम कमिटी अनाउंस हो रहा है, आईएसए फैमिली बेनोवेलेंट फंड, अभिषेक बासुकी जी उसके चेयरमैन हैं। आईएसए प्राइवेट प्रैक्टिशनर फोरम डॉक्टर अजय कुमार हैं। आईएसए एकेडमिक सेल डॉक्टर निशांत साय हैं। आईएसए कल्चरल क्लब डॉक्टर श्रीविद्या हैं। युवा आईएसए के डॉक्टर सुकेश कुमार हैं। आईएसए लीगल सेल के डॉक्टर बीके प्रसाद हैं। आईएसए न्यूज़लेटर के डॉक्टर विशाल वैभव हैं। आईएसए गाइडलाइन के डॉक्टर मनोज कुमार हैं। आईएसए स्पोर्ट्स सेल के डॉक्टर शिवप्रिया हैं। आईएसए फिट एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कैंपेन के डॉक्टर आलोक कुमार झा हैं। आईएसए इनोवेशन सेल के डॉक्टर गौतम साहा। आईएसए आर्ट एंड लिटरेरी क्लब डॉक्टर उमेश भदानी। आईएसए लीडरशिप समिट डॉक्टर देव संजय नाग। आईएसए विजिल डॉक्टर बिमोहन। आईएसए स्टार डॉक्टर हरि दामोदर सिंह। आईएसए एचओडी क्लब डॉक्टर डीके सिंह। आईएसए फाइनेंशियल एडवाइजर कमेटी डॉक्टर नीलम सिन्हा। आईएसए मेंबरशिप डॉक्टर नीरज कुमार। आईएसए पब्लिक कॉर्नर डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद। आईएसए एंडोर्स इंश्योरेंस स्कीम डॉक्टर राकेश कुमार सिंह। आईएसए नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनोज कुमार, सॉरी, इस सब चीजों के डॉक्टर मनोज कुमार कोऑर्डिनेटर रहेंगे। और एक कमेटी है आईएसए आईआरसी रिससिटेशन काउंसिल वाला, उसके चेयरमैन डॉक्टर शरद कुमार हैं। इन सब चीजों में 2 कोऑर्डिनेटर है, एक स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शरद कुमार और नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनोज कुमार। ठीक है सर, ये कमेटी हम लोगों ने आपस में डिस्कस करके बनाई है, जिसमें टोटल हो गए 21 कमेटी हो गई सर। तो 21 कमेटी में सर हर कमेटी में 5 मेंबर रहेंगे। तो देखिए, ऑलरेडी देखते देखते हमारे पास 50-80 मेंबर्स को हम लोग इकट्ठा करेंगे सर। तो हमारा ये टारगेट है सर। आप लोग का कुछ सजेशन हो तो बताइए, कमेटी को कैसे रिफॉर्म करना है। 2 मिनट आपका लेना चाहेंगे सबों का। शरद, मैं कुछ बोलूं? डॉक्टर विशाल, डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर श्रीविद्या, अजय, आप लोग भी बोलना चाहेंगे तो बताइए प्लीज। शरद, मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो बोलो। शरद, पार्टिसिपेशन को इक्वलाइज करके रखने के लिए कोशिश ये करना कि जो भी मेंबर्स होंगे, एक मेंबर 2 या 3 कमिटी में नहीं कंट्रीब्यूट करे। तो आई थिंक दैट विल बी गुड, एंड ट्राई एंड इन्वॉल्व as many people as possible सब ग्रुप्स में, ताकि इट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, तो गुड सजेशन। मैंने शरद कल बॉस, क्या, हाँ बोलिए। शरद बॉस, मेरा हाँ, सजेशन है कि जो भी कमिटी है 20-21, उसमें जो इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कल्चर कमिटी है, तो कल्चर कमिटी में जो हमारे यंग सिंगर हैं या जो भी है, हम लोग उसको खोज के सर्च करके उसको उस कमेटी में डालेंगे तो ज्यादा अच्छा से काम करेगा। और काम ही नहीं करेगा, केवल इसको, चूंकि प्लेटिनम जुबली है इस बार, प्लेटिनम जुबली, तो उसको हम चाहेंगे कि अपना स्टेट कॉन्फ्रेंस से पहले सब जितने कमेटी हैं सब में 1-1, 2-2, 3-3 एक्टिविटी हो, और उसको हम नेशनल लेवल पे हाईलाइट करें कि हमारा बिहार झारखंड कल्चर फोरम कराया, हमारा बिहार झारखंड आर्ट एंड लिटरेरी कराया, हमारा बिहार झारखंड लीगल सेल में ये काम किया, वो जो भी है, तो हम लोग उसको धरातल पे ला के इसको बढ़िया से काम करें। इसमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी देखना जरूरी है, और इसके लिए थोड़ा हम लोग को सभी को मेहनत करना पड़ेगा मेंबर को लाने के लिए। एक मेरा अपना एक आदमी सजेशन से था। नाम लीजिए सर। मनोज सर। हाँ मनोज सर। हाँ
हर एक आदमी से नाम लीजिए कि और उनसे पूछिए कि आपके एरिया में कितने लोग किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। मे आई कम इन सर? उस आदमी को तब सेलेक्ट किया जाए। मे आई कम इन सर? हाँ हाँ सर, क्या है कि हमने एक ग्रुप बनाया है बिहार झारखंड के जितने भी सिटी ब्रांच के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं, ठीक है सर। इसका एक अलग ग्रुप है। वहां पे हमने ये बात सब प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को बोले हैं कि ये कमेटी का नाम चला जाएगा, किस कमेटी है, आप अपने सिटी ब्रांच में बोलिए कि जो मेंबर किस ग्रुप में आना चाहता है वो अपना नाम दे दे। हम चाहेंगे हर नाम वहां के सिटी ब्रांच के प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी के थ्रू आए कि आगे चल के कोई कंफ्यूजन नहीं हो सर, क्योंकि कनेक्टिंग लिंक साथ ही हमेशा साथ रहना चाहिए। हर एक ब्रांच से आए। हाँ सर, वही हर एक ब्रांच से आए सर। और दूसरा कि जो जैसे श्री विद्या मैडम ने कहा कि कोई भी आदमी चाहे जो भी जितना भी प्रतिष्ठित हो, हर एक फैकल्टी हर एक ब्रांच में मैंने 21 जो आप बनाए हैं उस सब में उसका नाम नहीं हो, अलग अलग हो। सर हम लोग तो कोशिश इस तरह करेंगे से हम 105 आदमी को इंक्लूड कर पाएंगे। कोशिश करेंगे सर, कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना नाम आता है सिटी ब्रांच से, क्योंकि रिकमेंड करना भी है ना सर, उतना नाम निकाल के लाना है। हाँ, तो उनके लिए ब्रांच वाले को भी मेहनत करना होगा। हाँ, वहाँ के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को कल ये मैसेज चला जाएगा सर कि नेक्स्ट 5 डेज में 7 डेज में आप नाम नहीं देंगे तो फिर आपका लॉस है ना सर। मेरा एक और सजेशन है कि अगर मान ली प्रेसिडेंट सेक्रेटरी नाम नहीं देते हैं तो जो चेयरमैन है उसका भी फर्ज होना चाहिए कि हम स्पोर्ट्स सेल में जो स्पोर्ट्स प्लेयर के रूप में क्रिकेट मैच खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, कौन कौन है उसको सर्च करके वो सेक्रेटरी बिहार झारखंड या प्रेसिडेंट से बात करके उसको नाम ऐड करवाने का जिम्मेवारी चेयरमैन का भी होना चाहिए। एकदम इसीलिए चेयरमैन ऐसे लोगों को बनाया गया है कि आप देखेंगे जितने भी चेयरमैन है, दे ऑल आर सीनियर पीपल, they know the ISA, they know members, most of them are very very active. So उनके साथ प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी तो रहेंगे हर ग्रुप में, उनको हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए, और जहां भी जरूरत होगी हम लोग सिटी ब्रांच के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का भी मदद लेते रहेंगे सर, और अपने पुराने पास प्रेसिडेंट पास सेक्रेटरी सबका हेल्प लेते रहेंगे, जीसी मेंबर का सबसे ज्यादा। अरे नहीं, हमसे मेरा तो एक सजेशन है बॉस कि जल्दी से बना के एक क्रिकेट मैच करवा दीजिए ताकि नेशनल में जाए कि यहाँ पे एक्टिविटी शुरू हो गया है, क्रिकेट मैच या कल्चर फॉर्म। हाँ, निशांत कुछ बोलना चाह रहे हो? काफी सीरियस तबीयत ठीक है ना अभी? क्या हो गया निशांत को? क्रिकेट मैच कहाँ क्या हो गया? कोविड हुआ है मैनहुला के स्टेडियम ठीक रहेगा या जमशेदपुर ब्रांच ये एक गुपचुप खा ले जमशेदपुर सर, में जो बहुत देर जमशेदपुर में भी ये है स्टेडियम है, निशांत तुम दो ठीक हो जगह ना? तो आराम से हो सकता ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सब ठीक है ना? क्या हुआ निशांत को कोई प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर, इज फाइन। एक्चुअली उसको थोड़ा सा कोविड का प्रॉब्लम हो गया था, अभी ठीक है, इज रिकवरिंग सर, बेटर लगता है कि वो अनम्यूट नहीं। शरद बॉस जल्दी से एक मैच करवाइए, क्रिकेट मैच। हाँ जमशेदपुर या पटना में। एक मिनट, हमारे साथ ना बहुत दिनों के बाद डॉक्टर विशाल वैभव जुड़े हैं। विशाल वैभव, आप हमारे न्यूज लेटर्स के चेयरमैन हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? सर जस्ट मैं इतना ही पूछना चाहूंगा कि सर आई विल टेक दी एडवाइस फ्रॉम आवर साइंटिफिक सेक्रेटरी डॉक्टर निशांत सहाय सर, एंड यू विल बी गाइडिंग मी. So I think within coming 3 or 4 months we will be able to publish a good newsletter. But do give me okay, 3 months is good enough a time, and do give me some guidelines and also send me a copy. And also I would request sir कि जो भी committee आपने बनाया है ना sir, do give it in a certificate form so that मतलब एक letter from the ISA BJSA, it should be for all, so that they can also have that in their CVs also, that will add to their CV. Exactly. So what I will do, एक बीजेसे के लेटर हेड पे सबका नाम चला जाएगा, ऑल कमिटी का नाम एक साथ टाइप करके, पहले आ तो जाए, 15 दिन लगेगा सर, 15 दिन के अंदर में अगर नाम नहीं आएगा तो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और चेयरमैन मिलके कमिटी बना देगा। 15 दिन हम लोग देंगे, है ना, सिटी ब्रांच को। सर एक चीज, टाइम बॉन्ड नहीं होने से हर कुछ बाहर हो जाता है। 15 दिन में अगर आप नाम नहीं देंगे, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और चेयरमैन मिलके कमेटी बना देगा, ठीक है सर। उस कमेटी को हम लोग अपना एक बार हम लोग मीटिंग करके पास करा लेंगे और जीवीएम इस पे लेटर हेड पे इस कमेटी का नाम आ जाएगा, राइट?
और आपको 90 Fine, sir. डेज दिया जाएगा, एकदम आपको पूरा सपोर्ट रहेगा बीजीएसए का, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का, पूरी सोसाइटी का। हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे ऑफलाइन, है ना। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा हर कमिटी का, वी विल कीप वर्किंग ऑन दिस। टारगेट है 3 महीना में एक पहला ई न्यूज़लेटर निकाल देना है हम लोग को। डेफिनेटली सर। और डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, आप कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर राकेश। अभी मैं वो देख रहा था। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल। हाँ, यस, यू आर ऑडिबल। आपने जो ये प्रोफेशनल इंडेमनिटी स्कीम के बारे में आपने बोला कि आप इसका चेयरमैनशिप लीजिए, तो उसमें हमने देखा आईएसए के वेबसाइट पे जाके, वहां पे एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ उनका टाई अप है, दैट इज द कवर अप। ठीक है, अब जैसे मैं ही हूँ, मेरी पहले से पुरानी इंडेमनिटी स्कीम चली आ रही है, करीब 10-12 सालों से एपेक्स कंपनी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे लिए ये सही नहीं होगा कि मैं उसको छोड़ के किसी और के साथ जुड़ूं, क्योंकि कई केसेस हैं जहां की वो देख रहे हैं। उसके बाद जो दूसरी है उनकी हेल्थ स्कीम। हाँ हेलो डॉक्टर सर, सुन रहे हैं? Am I audible? सुन रहे हैं हम। हाँ, जो हेल्थ स्कीम है उसमें भी मैं मेरी स्कीम ली हुई है HDFC एर्गो के साथ। जब मैं कवर अप की स्कीम देख रहा था, उसमें भी हर एक में है कि कोई डिजीज से है तो वेटिंग पीरियड इज 2 years, एंड इट इज नॉट ए गुड आइडिया टू चेंज योर मीन्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स, क्योंकि यदि आप एक कंपनी से चेंज करके दूसरी कंपनी में जाते हैं तो आपके कई लॉसेस होते हैं, क्योंकि कुछ वेटिंग पीरियड होता है और भी कुछ बाउंडेशन होता है। तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा कि मैं जिस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ उसको छोड़ के दूसरे कंपनी के साथ जाऊं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि मैं उसको हेड करूं जिसका मैं खुद मेंबर नहीं हूं? मैं दूसरों को कैसे प्रमोट करूंगा कि आप आईएसए के बैनर के तहत जुड़े, क्योंकि वहां कोई और कंपनी, इट इज कवर अप, मैंने सारा डिटेल देखा, और ऐसा नहीं है कि उनका जो ये है मतलब प्रीमियम है वो किसी भी लिहाज से कम है। मैं देख रहा था above 50 years, if I take the of 10 lakhs, it is around 34-5,000। तो इतने में तो सभी जगह अवेलेबल है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं दूसरों को कैसे प्रमोट करूंगा कि वो आईएसए के बैनर तले जुड़े। जो नए होंगे, जो कहीं से नहीं जुड़े होंगे, वो जुड़ सकते हैं, लेकिन जो कहीं इसमें और से जुड़े होंगे। हाँ बोलिए सर। जो आईएसए इंडेमनिटी स्कीम है और एपेक्स है, मैं दोनों लिया हुआ हूँ, दोनों है हमारे पास। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। बट ये जो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे समझ से सर, माय अंडरस्टैंडिंग जो है, इट इज कि आपको चेंज करना या नहीं चेंज करना नहीं है। अगर एक आईएसए की तरफ से एक सेल बनाया गया है स्टेट का, तो जस्ट इन केस देयर इज सम यंग पर्सन हु वांट्स टू नो अबाउट इंडेमनिटी, एंड ये जो कवर यू वाला है ये आईएसए एंडोर्स किया है, बस ये आईएसए उसमें कुछ लेता, मतलब ऐसा नहीं है कि आईएसए की तरफ से है, वो एंडोर्स करता है इंडेमनिटी माने जो इंश्योरेंस है। सो जैसे कई हम लोग देखते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दी गई, इट इज जस्ट लाइक नॉट इवन एडवर्टीजमेंट। जरूरी नहीं है कि आप एडवर्टीजमेंट किसी चीज का कर रहे हैं तो वो कंज्यूम भी कर रहे हैं। आप एक फोकस एरिया में रहेंगे, एक नोडल ऑफिसर की तरह रहेंगे, जस्ट इन केस देयर इज समबडी हु वांट्स टू नो अबाउट इंडेमनिटी, एंड देन यू कैन डायरेक्ट देम कि आईएसए इसको एंडोर्स करता है, and this is how you can go about it. That is my understanding. ओके, उसके लिए मैं तैयार। आपको सिर्फ रास्ता दिखाना है, आपको ये नहीं है कि आपको चेयरमैन है तो आपको उसको लेना है। आईएसए से इंडोर्स्ड है तो इसका वैल्यूएबल बढ़ जाता है हम लोग का मेंबर के लिए। अगर वो इंडोर्स स्कीम अगर वो किसी चीज में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो आईएसए उसको प्रेशर देता है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। बाकी और कंपनी से हम लोग इंडोर्स्ड नहीं है, तो ये हमारे यंग के लिए खासकर हाँ नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ कि मैं नए लोगों को प्रमोट कर सकता हूँ। मैं भी यदि यंग रहता तो मैं शायद इस तरफ आता, लेकिन क्योंकि मैं किसी और के साथ जुड़ा हुआ हूँ। नहीं कोई बात नहीं, हम लोग भी जुड़े हुए हैं। हम लोग भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग बस इसका नोडल अफसर बन के। एपेक्स का प्रीमियम कवर यू सर?
हेलो, एपेक्स कैन आई का कम इन सर? प्रीमियम कवर यू से काफी ज्यादा है सर। उसमें हेलो, लीगल सेल कवर करता है, कवर यू मतलब वो आप अगर देखिएगा पॉइंट वाइज अगर देखिएगा तो कुछ कुछ डिफरेंसेस दिखेंगे आपको। कैन आई कम इन सर? कैन आई? हेलो, या श्योर श्योर। डॉक्टर राकेश, ऐसा है कि एपेक्स का मैंने भी लिया था, ठीक है, और काफी साल मैंने 8-10 साल उसको चलाया, लेकिन टाटा स्टील में चूंकि हम काम करते हैं तो कंपनी हम लोग को पूरा कवर करता है, तो मैंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद कवर ये लास्ट 2 ईयर से कोविड के चलते कवर यू का भी मैंने लिया, ठीक, इस साल नहीं लिया है, अभी है शायद इस साल शायद है, जून जुलाई तक होगा, हमें जहाँ तक याद है। तो एज ए चेयरमैन आपको कोई मॉरल बाउंड नहीं है कि आपको ये लेना है, पहली बात क्लियर, ठीक है। आपका काम है इसको समझना है, पॉलिसी को, नहीं वो राइट, समझ है मेरी, वो मैं इजली समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको समझाना है, इसको लोगों को गाइड करना है, प्रमोट करना है, है, मार्केटिंग करना है आईएसए के तरफ से, आईएसए की तरफ से मार्केटिंग करना है, प्रमोट करना है, और एक्टिविटी में हम लोग को शो करना कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, इतना मेंबर को इंडोर्स बनाए मेंबर, दैट्स ऑल। थैंक यू। डॉक्टर आशुतोष झा सर कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर आशुतोष कुमार झा, हेलो, डॉक्टर आशुतोष कुमार झा कुछ कहना चाहेंगे? हेलो, डॉक्टर आशुतोष झा सर, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। आई थिंक आवाज तक नहीं जा रही है, तो आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर कोशी वर्गीस, आवर सीनियर मेंबर। कोशी वर्गीस, इन कमेटी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हेलो, रियली इट वाज ए डॉक्टर, वेरी नाइस इंटरेक्शन, बहुत अच्छा रहा, और धैर्य से सुनना भी एक अचीवमेंट है, बहुत अच्छा रहा। कवर यू वाला तो मैसेज लगभग सबको आया है, लेकिन इसके अलावा जो अभी हमारा उसका आता है, जो हमारा फैमिली बेनिवोलेंट फंड है, उसमें हमारी भागीदारी कम है, ब्रांच वाइज बहुत कम है। मैंने अपने यहाँ भी सबको कहा है, और ये कोशिश करना चाहिए 100% कम से कम उसमें भी हम लोग जाएं। हेलो, राइट, सही कह रहे हो। हाँ, कवर यू तो बाहर का है, मतलब जो हमारी अपनी संस्था है, उसमें हमारी भागीदारी कम है। अभिषेक बासुकी है सर, उससे हम लोग बात करके, अगले टारगेट मेरा है कि फरवरी तक सब कुछ रेडी हो जाना चाहिए, ऑल ग्राउंड वर्क, 1 मार्च को इसको हम लोग को इंस्टॉल कर देना है, ऑल कमिटी, ठीक है, 1 महीने में सब ग्राउंड वर्क कर लेना। हाँ, डॉक्टर कोशी। Dr. Sharad, this is a good idea, what you have said. The first thing is it should be time bound. Second is ये जो common BJS से हम लोग का WhatsApp forum या platform है, what exactly, how many committees are there, at least committees का नाम डाल देना चाहिए, so that there would be people who may not otherwise get information. So आपके एरिया के इंटरेस्ट में you can go through the president or secretary of the branch and give your names करके one notice or circular should come out, so that it is democratic and everybody knows that such a committee is there. Then suppose there are more names coming in, then secretary of that particular city branch along with the office bearers of the state branch can then pare down these numbers and create the committees, final committees. That's a very good suggestion, Dr. Koshi. I will put all the committee names on Sunday. Next tomorrow is Saturday. Sunday को हम डाल देंगे, and I will request कि आप अपना इंटरेस्ट जिस कमिटी में है अपने सेक्रेटरी को भेजिए, not direct to state secretary. City secretary, मतलब city branch secretary को the persons have to send their names and वहां से compile करके मुझे भेजेगा. Exactly. Thank you. So very suppose good. there are more than 5, then a call will be taken. Suppose it is less, similarly it can be adjusted. Exactly. Very good. एक सेक्रेटरी महोदय एक चीज बोलेंगे आपको। हेलो शरद बॉस। बोलिए। हाँ बोलिए सर। बोलेंगे कि जो कमिटी है, जैसे सपोज दैट पीपीएफ में अगर कोई उसका जो नेशनल कमिटी में कोई है, उसका कोऑर्डिनेटर बिहार झारखंड से, तो वो हायर लेवल पे अगर चला गया है तो उसको बिहार झारखंड के में चेयरमैन ना बनाए और कमिटी में भी ना रखे उनको,
क्योंकि वो हमारे बिहार झारखंड से वो रिप्रेजेंट नेशनल फोरम में अगर कर रहे हैं तो जैसे कि हम पीपीएफ के कोऑर्डिनेटर हैं बिहार झारखंड के, तो मेरा नाम जाना नहीं चाहिए। उसी तरह बहुत से ऐसे मेंबर हैं जिनसे पूछ लीजिए कि आपका उस कमिटी नेशनल जैसे में है कि नहीं, तो अगर वो है तो फिर इस लिस्ट में उनका नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हायर है, वो नेशनल लेवल पे है। तो ये बहुत अच्छा, हाँ वेरी गुड तो सजेशन। अगर मान ली कोई कहता है कि नहीं हम तो उस कमिटी में है, नेशनल में, हमको क्यों नहीं बिहार में रखे, तो उनको कहना है कि भाई आप नेशनल लेवल पे चले गए हैं तो आपका नाम बिहार झारखंड स्टेट लेवल पे अब नहीं रहेगा, आप हमको वहां से गाइड कीजिए। एकदम आपकी बात एकदम सहमत है सर। वेरी गुड सजेशन डॉक्टर कोशी एज वेल एज डॉक्टर मनोज। हमारे साथ डॉक्टर डॉक्टर अजय भाई हमारे पुराने मित्र और पास सेक्रेटरी भी है। अजय भाई कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बहुत सर, एक्चुअली मैं काफी लेट हो गया था तो अभी हॉस्पिटल से घर पहुंचे हैं। कह रहे कि अभी तो काफी अच्छा कुछ हुआ। वो हम लोग को मेन एक्टिविटीज पर ध्यान देना है। कमिटी तो बन गया, अब हम लोग को एक्टिविटीज के लिए जो भी एक्टिविटीज हो तो हम लोग को, क्योंकि अभी तक हम लोग एकेडमिक छोड़ करके कोई अदर एक्टिविटीज पर ध्यान नहीं दिए हैं। एकदम सही कह रहे हैं, सही। तो हम लोग चाहेंगे कि सारा जो भी कमिटी बना है तो सारे लोग को एक्टिवेट करें और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कराना है, जैसे कल्चरल हो उसकी एक्टिविटीज करा देनी है। जैसे युवा का है तो कुछ दौड़ लगवा दें, मॉर्निंग वॉक करवा दें, कुछ ना कुछ जो है ये सब करा करके फिट यंग एक्सरसाइज। हाँ एक्सेलेंट, वेरी गुड, सही बात। तो ये सब कुछ एक्टिविटीज करा करके, फोटोग्राफी करा के, वीडियोग्राफी करा करके और हम लोग नेशनल को भेजेंगे। और ये बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, कमिटी में जो भी चेयरमैन हो, डजेंट मैटर, हर एक्टिविटीज में हर को पार्टिसिपेट करना चाहिए। मतलब नॉट कि हम उसके मेंबर बन के, बिना मेंबर बने हुए भी हम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारे लोगों को करना है। सही कर, एकदम सही कर। अभी आपको सेक्रेटरी महोदय जो बताया शरद बॉस, कि आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में बिहार झारखंड पीछे रह गया। दिस इज एक्चुअली पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है ना, तो हम लोग को जल्द ही इसीलिए बोल रहे हैं कि नवीन मल्होत्रा हम लोग कुछ एक्टिविटीज करनी चाहिए थे जो हम लोग नहीं कर पाए। नवीन मल्होत्रा अभी टाइम दिए हैं आपको कि हम चाहेंगे कि बिहार झारखंड से भी आए, तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो हम लोग का हिंदी में या भोजपुरी में, हम लगता है हिंदी ठीक रहेगा, उसमें हम लोग इसको जल्दी से वीडियो रिकॉर्डिंग कराएं और इसको जल्दी से हम लोग नेशनल को भेज दें, बहुत जल्दी 1 वीक के अंदर, ताकि हम लोग का भी नेशनल लेवल पे आए। थैंक यू, वेरी गुड सजेशन। बिल्कुल बिल्कुल, और कोई सजेशन है तो बताएं, फिर नहीं तो हम लोग क्लोज करते हैं, ऑलरेडी 10 बजने क्लोज करें। और बाकी हम लोग पर्सनल लेवल पर भी बात करेंगे एक दूसरे से, तो बात होते ही रहती है। तो पहला काम करेंगे, संडे को हम ग्रुप में डाल देंगे ऑल कमिटी का नाम, उसके चेयरमैन का नाम, और अपने अपने सिटी ब्रांच के सेक्रेटरी को अपना इंटरेस्ट भेज दीजिए। वो 15 उसको वो 15 दिन के अंदर मेरे पास नाम आ जाएगा। नेक्स्ट 15 दिन में पूरी कमिटी बना के 1 मार्च को हमको उसको डिस्प्ले कर देना है, राइट? हाँ एकदम बिल्कुल। और टाइम बॉर्ड नहीं, टाइम से नहीं। स्पोर्ट्स वाले में भी बस मेरा सजेशन है कि जैसे क्रिकेट में ही है, या जिसको फुटबॉल में, या किसको वॉलीबॉल में, जिसमें इंटरेस्ट है वो कुछ कुछ अपना ब्रांचेज वाइज बना लेंगे। पटना का बोकारो से मैच, बोकारो का जमशेदपुर से मैच, इस तरह से कर करके हम लोग एक्टिविटीज कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत फिट एंड फाइन भी रहेंगे हम लोग। सही बात, ठीक है। तो चलिए इसके साथ ही हम लोग क्लोज करते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। डॉक्टर श्रीविद्या, कोशी, निशांत, राकेश, हेलो मनोज भाई,
विशाल, अजय भाई, आप Thank सबों you, को sir. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूबल टाइम। डीके सर जस्ट निकल गए हैं लग रहा है, तो चलिए हाँ। मिलते हैं फिर। आज का मीटिंग बहुत ठीक, अच्छा good रहा। night, Thank you, sir. Good night, sir. थैंक यू। Good night. Good night. Good Good day. night. गुड नाइट। एक क्रिकेट Good मैच night, होगा, all of you. प्रेसिडेंट वर्सेस सेक्रेटरी 11 ऑफ आईएसए बिहार झारखंड। कोसी बॉस बिल्कुल। बोल नहीं नहीं नहीं, गुड नाइट। गुड Good नाइट। night.